फुटबॉल बोल पे आप सभी का फिर से स्वागत है. लॉन्ग टाइम नो सी. आई मीन दैट वेरी सार्कास्टिकली, क्योंकि कुछ 15 मिनट 20 मिनट पहले ही हमारी एक स्ट्रीम खत्म हुई थी. बट वी रेडी टू गेट स्टार्टेड विद द सेकंड स्ट्रीम as we build up to Senegal versus Netherlands, and I'm in the company of the same old usual suspect, Yash Pathak. Yash, how are you? Different attire but same old Yash Pathak, है ना? न्यू मैच न्यू मी वाला फड्डा है मेरा भाई. कपड़े बदल लिए थोड़े. मैंने बोला अभी नेदरलैंड्स की जर्सी पहननी है. नेदरलैंड्स की जर्सी नहीं है मेरे पास, वरना वही पहन लेता. बट या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एनकाउंटर. Yesterday I spoke to Nishad in length about on the show itself that how important will this game be for these two teams, because obviously start is the key and Senegal missing out on their main man, their number 10 Sadio Mane. So I just want to see how they shape up against them, because it's fun to see these underdog teams. I won't say Senegal is underdogs, but still the fact that they are not Netherlands is a very important encounter for us. यश, मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है, लेकिन it was Senegal that beat France in the 2002 World Cup. Oh yes, in the opening game of the 2002 World Cup. Yes. 1-0. It was Senegal and it was Papa Boba Diop. I don't know if I'm getting the name right. It was him who poached that, and it was a very amazing victory for Senegal. It was their first game, and they are the only team in the history of World Cup to win on debut the African team in the whole history of the World Cup. So that's a very big stat. And beating France, who were the defending world champions back then, so that really made a statement at that time. But yeah, this Senegal team is quite different. They have a lot of experience. So the Champions League winners that they have in Mendy and Sadio Mane, who is also part of the camp, not the part of a playing 11, but still, the quality that they possess. Or 2002 World Cup mein, it wasn't just the first game upset that they were able to produce, beating France 1-0 courtesy of Papa Bopa Diop winner, assuming I'm pronouncing his name correctly and not mangling the pronunciation. लेकिन उस World Cup में they reached the quarterfinals 2002 में, which is very impressive. Again, not considering Senegal to be minnows by any stretch of the imagination, but reaching the quarterfinals in 2002 was very very impressive. Koulibaly, the captain, जो Chelsea के लिए खेल रहे हैं, पहले Napoli के लिए खेलते थे, इस season moved to Chelsea under Thomas Tuchel, but I think he hasn't played too much ever since Graham Potter took over. Maybe injury के वजह से. लेकिन he's an absolute unit who plays in central defense. Napoli के लिए बहुत अच्छे थे, and I'm hoping that he doesn't play as well for Chelsea, given the United fan that I am. But the thing is that there were a lot of speculations of him coming to Chelsea for a very long time. Chelsea were targeting and having an eye on Koulibaly. I think before this year itself, they were wanting him in the January transfer window as well. But I think the contract was such, he was contract bound at Napoli, that he couldn't make it. But then now that he's here, you can see that the experience that he gets, he's a leader itself. The captain's armband will just be a piece of cloth on his arm, but the experience that he possesses. He's played in the Italian league. He's played in the toughest league when it comes to defending, or the most physical league that it's called. The Italian league is called one of the most physical leagues. So I think that is going to be a great thing to watch today, because Netherlands are no bunnies. They are one of the best teams in the world. They prefer to play in a very attacking formation, a 3-5-2, which becomes a 5-3-2 while they defend. So that is something that Louis van Gaal has, replicated in United as well. I think he was the first manager. I mentioned it yesterday as well. He was the first manager in the Premier League to start a 3 at the back formula, which didn't really work wonders for Manchester United back then, because you're making an Angel Di Maria run up and down as a left wing back. That's not going to work for you, because it just didn't work for him at that time. But he's made sure that this Dutch team plays in a certain format, or in Hindi we call it एक फंडे में खेलते हैं, वो एक अपने clutter में खेलते हैं, and that has paid a lot of positive. They've got a lot of positive results because of this very formation. और ये लुई वैन हाल का third stint है as a Netherlands manager, and you'd have to think that this might be his last stint as a manager in football. Of course, बहुत illustrious manager रह चुके हैं, बहुत clubs को manage किया है, Netherlands national team को manage किया है, the likes of Bayern Munich, Manchester United, Azi Alkmaar, तो बहुत pedigree है इस manager में. Let's see if he can go out on a high. Netherlands के squad पर अब नजर डालते हैं. Yes. What do you think, Yash? कितना तगड़ा squad है? What do you think the strengths are? What do you think some of the weaknesses are of the squad? So I think the weakness in this squad, if I have to be very critical about it, would be an out-and-out goal scorer.
I don't see them having an amazing threat when it comes to in the forward line. Their defense is rock solid. You see Virgil van Dijk, Dillett is good. Nathan Ake has been playing regularly. Malacia is a left back who plays for Manchester United, but no place in the starting 11 for him, I guess, today. You've got Denzel Dumfries. We know how attacking he is as well on the right wing. You've got Daley Blind. So they've got a very good squad in particular. Now, the fun part would be who would be the midfield trio, because I know that Frankie de Jong has his name in it. Davy Klaassen, does he have a chance? Matter De Roon, does he have a chance? Because all these players are amazing. But then I still feel somewhere that Frankie de Jong would be very, very, very pivotal if this team has to move forward, as they don't have an out-and-out goal scorer, because even Steven Bergwijn is a winger who will be forced to play in the forward two, if I'm not wrong, in the 5 defense, 3 midfield and 2. Yeah, he'll be taking the forward two with Vincent Janssen, if I'm not wrong. That would be the obvious pick. But you never know. A Luke de Jong, Memphis Depay off the bench. Anything can happen. तो ये था स्क्वाड, ये था अपना यूनिवर्सल सेट जो मैथ्स में कहते हैं. अब स्टार्टिंग 11 भी देखेंगे उस यूनिवर्सल सेट से. नेदरलैंड्स की स्टार्टिंग 11 5-3-2 फॉर्मेशन. डाली ब्लिंड, नेथन आके, वर्जिल वैन डाइक, डिलाइट, फिर डमफ्रीज, डियोंग, गैक्पो. कौन है लेफ्ट हैंड साइड में? यश? I cannot read his name clearly, but it's something like Berkilis, if I'm not wrong. अच्छा, फिर बर्गवाइन. आई थिंक हम दोनों की आंखें थोड़ी खराब है. मैं तो लेंसेज भी पहना हूं, आंखें चेक करानी पड़ेगी. उम्र हो गई है. you're telling me I'm 29 on the brink of 30. 7th December को I'll turn 30. आजकल लोग मुझे जिम में अंकल बुला रहे हैं. एक टाइम हुआ करता था people would be like अनुभव भैया, आजकल अंकल बुला रहे हैं. Anyway, I have to embrace it. You know, age is something that you can't really. वो भी लेंस पहनते हैं क्या भाई? तुमको अंकल बुला रहे तो क्या? नहीं, you know to be honest, जब मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ, I feel कि उनकी आंखें, they have proper 20/20 vision. So I don't blame them for calling me that. Anyway, 5-3-2 system. लुई वैन गाल का एक अद्भुत स्टाइल होता है, एक अनोखा तरीका होता है. एज यू सेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ काम नहीं किया, लेकिन नेदरलैंड्स के साथ आपको क्या लगता है, ये जो क्रिटिसिज्म उनको मिली थी जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर थे, वो ये थे कि वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं अपने टैक्टिक्स में. कभी डिपेंडिंग अपॉन द ऑपोजिशन, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेयर्स दैट यू हैव, आपका सिस्टम हो सकता है काम नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपको कोई ट्वीक्स करने पड़ेंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से मे बी मैनचेस्टर यूनाइटेड didn't quite maybe underperform to some extent under Louis van Gaal. तो जितना आप उनको देखे एज अ क्लब मैनेजर, एज अ कंट्री मैनेजर, आपको क्या लगता है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी जो उनकी है एंड कंप्लीट बिलीफ इन हिज सिस्टम, माय वे और द हाईवे, वो क्या नेमेसिस हो सकता है नेदरलैंड्स के लिए इस वर्ल्ड कप कैंपेन में? Well, the thing with Louis van Gaal, we saw it in the Euros as well. He fixed and he was stuck to that particular playing format. उसको 3-5-2 के अलावा चेंज करना उसे अच्छा नहीं लगता. अब the thing is that in 3-5-2 or 5-3-2, whatever you call it, I believe it's a 3-5-2 because when Dumfries and Daley Blind go up, there is a big hole in their defense. And not every team has that, sometimes there is a switch of play where you are just out. Even we saw in the Champions League final where Robertson went ahead. Arnold is always ahead, we know that. But when Robertson went ahead and that one attack that Real Madrid made, which was a clear-cut attack, and they scored the goal behind the defense. So I think that is something that is going to be exploited. इनकी अगर आप टीम देखोगे सेनेगल की, तो they've got so many players who play in the Premier League. You know, इस्माइला सार है उनमें जो आगे खेलते हैं, जो प्रीमियर लीग खेल चुके हैं. They've got Mendy from Leicester. They've got Kouyaté as well, who's played the highest level. Koulibaly की तो हमने बात बहुत की. Mendy है, तो they've got a good experience side यार. What do you think? नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट. मैं ये सब नाम देख रहा हूँ एंड बहुत सारे नाम मैं पहचानता हूँ. जैसे आपने कहा, बहुत काफी प्लेयर्स का प्रीमियर लीग में एक्सपीरियंस रह चुका है. तो सेनेगल, आई थिंक यू कैन टेक सेनेगल लाइटली ओनली एट योर ओन पेरिल. तो आई थिंक दिस promises to be on paper one hell of an encounter, Senegal versus Netherlands. इनका जो नंबर 13 है, अगर आप सब्स्टिट्यूट्स में देखोगे, टिलीमान NDI. He plays for Sheffield United, and I watched a couple of games. So he's just an out and out, tall guy. He's a runner, and he'll just come and he'll just head the ball. He's a very good guy in the air. In the air, he's very threatful. But then that's what it is. They want runners and not, poachers in the team. So I think Isle was substitutes and he's not starting today. But I've been following the Premier League and the Premiership really closely. So I just
saw his name and my eyes lit up. I was like, is he the same guy? Yeah, I just got the confirmation he is. Even Diallo, their left back, plays for Southampton. So they've got a lot of Premier League players in this team. Anubhav, they've got a lot of Anubhav in them. तो इनके अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए अगर ये रिजल्ट को इस मैच में से कुछ भी रिजल्ट निकाल सके तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री ही होगी उनके लिए. इवन अ ड्रॉ वुड बी अ विन बिकॉज इक्वेडोर एंड कतार वुड बी अ रिलेटिवली इजियर फिक्सचर. दैट्स व्हाई सेनेगल वुड बी वेरी 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 माइंडफुल ऑफ हाउ दे सेट अप अगेंस्ट दिस डच साइड. और अगर अनुभवी प्लेयर्स, वरिष्ठ खिलाड़ी, नामचीन खिलाड़ी के बारे में बात करें, फिर साडियो माने, जिनका नाम आपने लिया था एट द स्टार्ट ऑफ द लाइव स्ट्रीम. ऑफ कोर्स अफसोस की बात है, यू नो, फ्रॉम अ न्यूट्रल्स पर्सपेक्टिव और एनी फुटबॉल फैंस पर्सपेक्टिव, कि ही इज इंजर्ड फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ मैचेस आई बिलीव. लेकिन हम यही आशा करेंगे कि he ends up undergoing a speedy recovery and we see him in action at some stage during the World Cup, because of course not just a breathtaking play for Senegal, but at the world level, at the club level, he's proved that he's one of the best strikers in the world. Liverpool से Bayern Munich का है, now he's banging in the goals for Bayern Munich as well. आप क्या उनको follow किया है playing for Bayern Munich? मैं ज़्यादा follow नहीं किया हूँ, कभी-कभी highlights देख लेता हूँ, and he's been scoring some good goals. But how is his first season been at Bayern Munich so far? I have been following him. उसको number 17 jersey दी है वहाँ पे. मैं तो सोच रहा हूँ वहाँ के number 10 ले ही लेगा वो, but then नहीं. They've got Gnabry there, they've got Sané there. So the game time that he's getting is not full 90 minutes. He's starting the games for sure, but 70th, 75th minute mein he's being subbed off. But that is enough for him to get a goal or two. And as much as I know Sadio Mane को जितना मैंने follow किया है, he's one of the most selfless players that I have seen in football, because he believes in his team, you know, getting there. We saw with Liverpool as well. जब उन्होंने Liverpool को छोड़ दिया, इतना बड़ा hollow create हो गया Liverpool के left side पे भी. Luis Diaz भी injure हो गए, so they don't have anyone to replace him. And sometimes some players are just irreplaceable. You can't do anything about it. बहुत rarely you can replace a Kun Aguero with a Haaland. तो बहुत कम होता है ऐसा. तो ये देख रहा हूँ मैं जिस तरह से सेनेगल की टीम है उसमें साडियो माने की एब्सेंस बहुत ज्यादा महसूस होने वाली है. But moving on, if you see the other two that they have, I have their names here, I have the playing 11 here. Ismailia Sarr तो चलो एक विंगर है, but देखो तो डियाटा करके एक उनके प्लेयर है लेफ्ट विंग पे. मैंने उनका फुटबॉल कभी देखा नहीं है, but I've heard a lot. He's not the most, I would say, skillful player, but he's a runner. Yesterday I was speaking to Nishad as well, and we were having this conversation itself कि सेनेगल कैसे खेलेगी. So I think Mendy का इसमें रोल बहुत important है as a defensive midfielder to do that distribution on the wings. If they can exploit the fullback area of Netherlands, this will be very, very, very amazing. और आपको क्या लगता है इस फर्स्ट हाफ की प्रेडिक्शन क्या होगी? आप अगर स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करें तो आप क्या करेंगे? मैं इस प्रेडिक्शन पे जा ही नहीं रहा. मैंने फर्स्ट मैच कतार में प्रेडिक्ट किया था 0-0, वहां भी गोल मारा. ये सेकंड मैच में मैंने 0-0 किया था, वहां भी गोल मारा. अभी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 1-0 नेदरलैंड्स. अभी ड्रॉ हुआ ना तो फिर मैं अगले सेशन से प्रेडिक्ट नहीं करने वाला. ये क्या बात है? लेकिन that should not dissuade our viewers from sending us their predictions. तो comment section में भैया जी प्लीज जल्दी अपने predictions शेयर कीजिए. मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ की प्रेडिक्शन 0-0 होने वाली है. इट्स गोइंग टू बी 0-0 at the halfway mark. देखो, आई डोंट नो याश आपको याद है कि नहीं, मैंने प्रीवियस गेम में कहा था कि इंग्लैंड अपना खाता खोलेगा बिटवीन द 35th मिनट एंड द 40th मिनट. एंड एग्जैक्टली 35th मिनट में गोल हुआ था. यही डिफरेंस यही था कि at before the end of the first half वो लोग और 2 गोल मारे, so it finished 3-0 at the halfway mark, whereas I had predicted 1-0. लेकिन जो टाइमिंग ऑफ फर्स्ट गोल की जो मैंने प्रेडिक्शन की थी वो एकदम सटीक प्रेडिक्शन थी. ऑन पॉइंट. जब भी उसने गोल मारा ना, और जब मुझे पता चला कि 30th मिनट पे मारा है, मैंने ये सोचा था कि मैं ये इस शो में ब्रिंग अप करूंगा, जरूर ब्रिंग अप करूंगा कि हमारे साथ एक गुरुजी बैठे, हमारे साथ एक बाबा बैठे हैं जो दाढ़ी अभी थोड़ी और बढ़ा लो तो मैं गुरुजी बोलूंगा. बट जो प्रेडिक्शन था एकदम स्पॉट ऑन था, बैंग ऑन था. And how happy are you? वैसे England 6-2 यार, it's a very big win. Last में चलो उन्होंने 1-2 गोल कंसीड कर लिए, but overall they look very clinical. They never looked in a state of panic or any kind of trouble caused by the Iranian midfield and attack. Absolutely. और मैं आपको भी दाद देना चाहूंगा क्योंकि आपने कहा था इंग्लैंड के साथ टिपिकली क्या होता है, जब वो लोग एक गोल मारते हैं then the floodgates open. Then उसके बाद the second, third, fourth, fifth goals they come more freely. तो हम लोग वही देखे, after the first goal went in, it took 35 minutes for them to score the first goal, but then they ended up scoring 5 more goals in the match. Yeah. But very clinical performance, very professional performance. I thought all the players stood out. Harry Kane, although he did not get on the scoreline, तभी भी उनके 2 assists थे. Yep. Raheem Sterling, जो चेल्सी के लिए इतना अच्छा नहीं खेला अब तक this season, I think ये जो गोल उन्होंने मारा will do wonders for his confidence. And of course, Marcus Rashford, United player,
मैं पल्लव दा को भी बोल रहा था स्ट्रीम में कि आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि उन्होंने इतना कूलली और कामली वो फिनिश किया, क्योंकि रैशफोर्ड के साथ जो मैं देखता हूँ क्लब लेवल में, बिकॉज उनमें इतना वो जुनून है, वो उत्सुकता है, कभी कभी आई जस्ट फील ही एंड्स अप बिकमिंग अ बिट रैश, अ बिट वाइल्ड, ही इज नॉट एज, मतलब फिनेस इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट यू नो डिस्पाइट हैविंग जस्ट कम ऑन, fresh legs थे, but हो सकते थोड़े rusty थे because you know he hadn't been on the pitch, but the way he actually controlled it, the way he beat that defender and the way he slotted it past home, बहुत ही commendable था. And of course we have to talk about Bukayo Saka as well. मतलब जो comeback रहा है उनका, you know, from quite literally being down in the dumps, down in the doldrums after missing that penalty, getting so much flack, so much abuse from English fans worldwide, or England fans worldwide, to now scoring 2 goals in his first ever World Cup match, becoming Arsenal player of the season, being the highest goal scorer for Arsenal last season, I believe, if I'm not mistaken. I guess exactly. So this is quite literally a comeback, the stuff that dreams are made of. Absolutely. And the thing is that us as fans, you know, we are so professional, so passionate, we are so weird. I think there are no adjectives left to describe us. You know, we are so different as well, because what happens is when our team is doing good, we are always behind them. We will support them as if they are gods. We'll make them gods. But as soon as the team underperforms or someone has done something, we try to pick such bad things. Like I have seen them pick the worst things. Racial abuse कर दिया उस पे, Rashford पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा किया. Rashford in fact is known to be a selfless guy. He's been doing charity work a lot. I've read a lot about it. कि वो कितना schools में और बच्चों को खाना देते हैं. So much that he's doing on a personal level. So I think as fans, we need to take this into consideration as well. But you know, Yash, that's precisely why Marcus Rashford, जब वो इतना अच्छा खेलने रहे थे last season, उनको इतनी आलोचना झेलनी पड़ी थी, because people were saying, देखो बॉस, तुम इतना सब कर रहे हो off field, and हम लोग इसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं. We commend the fact that तुम society के लिए ये सब कर रहे हो, you're donating money, this that. लेकिन at the end of the day, तुम्हारा performance field पे is not good enough. So why you should probably be focusing more on what's happening on the field as opposed to these off-field affairs. Now, माना भले ही कोई भी relationship नहीं है, there's no link. भले even if he wasn't doing like all of those off-field things that he was doing for charity, philanthropy, maybe his performance would have been as bad as it was last season. लेकिन तभी भी people, it can be easy, as you said, you know, it can be easy for spectators to falsely attribute someone's poor performance to a factor that might not have any role to play in the player's performance. Exactly. I completely agree to this. हम इंडिया में भी देखते हैं, हम क्रिकेट लवर्स हैं, हमने, आई एम श्योर अनुभव आपने भी ये देखा है अपने लाइफ में. क्रिकेट में ऐसा होता है कि हमारे प्लेयर्स है वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं वर्ल्ड कप में, बट सम टाइम व्हेन दे अंडर परफॉर्म, कहीं हार गए पाकिस्तान से गलती से, कहीं बांग्लादेश से हार गए, तो पता नहीं उनके पुतले जलाए जाते हैं, उनको चप्पलें मतलब उनके इस पे की जाती है, घर में पत्थर फेंकते हैं. आई एम लाइक, प्यार भी मत दो ना फिर, अगर इतना देखना है तो क्यों. वो भी बेचारे सोचते होंगे, अभी विराट कोहली को आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसकी कमिटमेंट को क्वेश्चन कर रहे हो. Like, you know, it's very surprising. It amuses me so much that a person who gives so much for the country, and these players as well, they put their blood, you know, they give their blood and sweat for their team, and then to receive this is very, you know, a lot of hate is not good. In fact, Virat Kohli ने कहा था, I think ये उनका बहुत पुराना इंटरव्यू था, and he was talking about how शुरू में जब he was bursting onto the scene when he was a young player, वो सोशल मीडिया काफी चेक करते थे, मतलब सामाजिक माध्यम में क्या हो रहा है, क्या चर्चा हो रही है, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, ही वुड चेक इट अ लॉट. एंड ही सेड कि ऐसा हुआ करता था, सपोज विराट ने सेंचुरी मारी तो ऑफ कोर्स पूरा देश, द 1.3 1.4 बिलियन पीपल, सब उनके गुणगान गा रहा है, यू नो, सब तारीफ कर रहा है. लेकिन अगले दिन सपोज विराट कोहली गेट्स आउट फॉर अ जीरो, वही सेम बंदा जो विराट कोहली की प्रशंसा कर रहा था, वो अब उसको गाली दे रहा है. तो विराट शुरू में would let all of these comments affect him a lot. जो भी negative comments आते थे, he would be like, यार, you know, यही बंदा, इसको मैं दिखाता हूँ, you know, ये गाली दे रहे हैं ना मुझे, मैंने आज 0 मारा, इसको next मैच में दिखाता हूँ, 100 मारूंगा, इसको I'll prove him wrong. And then all of a sudden, एक दिन he was doing some soul searching and he realized कि यार, am I really trying to prove some anonymous person, some anonymous troll on social media, जिसका actual नाम भी मुझे मालूम नहीं है, some stranger, am I actually trying so hard and losing sleep over this comment that is come in? तो तब से he decided कि देखो, I am not playing the game to prove others wrong. I have enough faith in my own ability. I have enough belief.
I'll give it my best for my country. Results dekha jayega, but I'm not going to be playing the game to prove all my doubters and my haters wrong. Absolutely, absolutely. Even Cristiano Ronaldo gave an interview just before the World Cup where he was asked that, what do you have now left to prove? Kya aur bacha achieve karne? Usne bola, if at 37 years and 8 months, I still, after winning so much and achieving so much, you expect me to, give you an answer? या इसके बाद भी कुछ बचा है प्राप्त करने के लिए? तो कुछ नहीं, तो मोक्ष प्राप्ति बाकी है मेरी, मैंने सब कर लिया है भाई. सेलिब्रेशन ही उसका अभी रोनाल्डो का ऐसा हो गया है कि he is, I'm just one with God. Now I'm done. I've achieved everything in life. And I'm sure you're a United fan. And it's sad to see what's going on in the United camp right now. But I feel that there is a lot of air created by the media. And इतना कुछ है नहीं. क्योंकि I read Bruno Fernandes का भी interview मैंने पढ़ा था. और not the interview he said, but something what was written. तो लिखे में ऐसा उन्होंने बोला था कि उसने अच्छे से उसको treat नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. In the video it was shown, the video that I saw usme Portuguese mein, I think they were talking in Spanish or whatever, and usme they came to a confrontation and Ronaldo was not greeted properly, and there was a lot of slack given to Bruno Fernandes, but Bruno later reconfirmed that it is nothing like that. The audio was muted in that video. जब उसका ऑडियो और सब जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें ऐसा कहा था कि रोनाल्डो का और उनका तो बहुत अच्छा चल रहा है, उन्होंने तो अच्छे से उसको ग्रीट भी किया, वो तो sarcastically वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे ऐसा वैसा, the air fizzled out. तो ये जो मीडिया है ये आई थिंक ज्यादा प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है rather than जितना है. तो आई बिलीव दैट व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, आपका जो पैशन होता है ना वो ज्यादा ही उमड़ के आता है. क्लब तो फिर भी ठीक है, कंट्री तो कंट्री होती है. राइट, एकदम सही कहा आपने. देखिए जो इंटरव्यू हुआ रोनाल्डो का पियर्स मॉर्गन के साथ, वो पूरा 90 मिनट्स का इंटरव्यू जो हुआ, दैट वाज गोल्ड डस्ट फॉर द मीडिया. मतलब द मीडिया हैड अ फील्ड डे. द फनी थिंग वाज, मैं किसी की ट्वीट पढ़ा था कि it's the eve of the World Cup, and yet the biggest story that's dominating the front and back of all sports pages of every single newspaper is Cristiano Ronaldo and his interview with Piers Morgan talking about Manchester United. It's the eve of the World Cup. But it was a bombshell interview. That's how the interview was described, क्योंकि बहुत खुलासा हुआ, बहुत revelations हुए. And you're very right about the incident with Bruno Fernandes. तो क्या हुआ था? तो you gave 90% of the details. 10% में बस थोड़ा ऐड करूंगा. So what happened was, जब ब्रूनो एंटर किए पोर्चुगल का ड्रेसिंग रूम, ब्रूनो was the last one to enter the dressing room, and so when he entered, तब रोनाल्डो ने sarcastically उनसे पूछा, did you come here in a boat? I mean, is that why you're so late? मतलब sarcastically, दोस्तों के बीच में थोड़ा banter होता है. And तो ब्रूनो ने कुछ जवाब दिया होगा. And so because ऑडियो नहीं था, हम लोग को लगा कि it was a very cold handshake, a very frosty handshake. But it was just two pals who were just exchanging some banter. Ronaldo was giving him a hard time by saying, did you come here in a boat? And then Bruno का कुछ जवाब था, maybe explaining as to why he was late. लेकिन media ने कहा कि, there was a frosty handshake and a lot was made about it. And then the Portugal captain, he clarified things in the media the following day. And Bruno Fernandes sarcastically, after the Portuguese captain clarified what had happened and what the exchange was like, Bruno ne kaha, you should have let the rumor mills run for a bit longer. Why did you have to tell the truth so early? तो यार ये तो होते ही रहता है. ये ऐसी चीजें हैं जो मीडिया आई थिंक अपने इसके लिए करती है, पब्लिसिटी के लिए. बट आज की अगर मैच की बात करेंगे, अगर अनुभव, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वैन डाइक को देखने के लिए, बिकॉज ही इज बीन रेफर्ड टू एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. आई हैव सीन so many players comment about him. Yesterday on the show as well, I was talking about this very thing, that all the pundits, I think 70 to 80% of them, defenders खुद होते हुए, Rio Ferdinand, ये सब भी उसको बहुत highly rate करते हैं. Virgil van Dijk has been playing for Netherlands, और वो जहाँ से आया है, being a winger, left back, winger, सब जगह खेल चुका है. फिर finally center back पे जब वो establish हो चुका है आज, you see now he's played 49 matches, 6 goals for him. The fact that Netherlands is so dependent on this guy, how important is his role in this World Cup? It's the first World Cup that he's playing. 18 में लोग qualify नहीं हुए थे. It's the first chance for him to, sort of put his name at an international level, at a World Cup level. So do you think that he will perform to the potential that he has and the expectations that people have created off of him? I hope he does, because you want these big players, the likes of Van Dijk, to light up the World Cup. When these big players perform, of course you want youngsters to
to show what they're made of and pleasantly surprise people who might be watching them. लेकिन तभी भी, you know, एक expectation होती है with the biggest players, and I think Pallab was mentioning in one of our earlier streams कि देखो, at the end of the day, big players are called big when they end up winning big matches for their countries. Right. At the biggest level, you know, World Cup mein, aap theek hai, club level pe, you might win the Champions League, you might win the Premier League, that makes you a legend. But if you want to become like an ultra legend, like next level legend, then I think you have to do something big when it truly matters, in like a big final or at the biggest stage, and no bigger stage than the World Cup, of course. In terms of how I think he's going to perform, dekho, captain hai Netherlands ke, so expectations will be sky high. The Netherlands have a solid squad as well. Yeah. Louis van Gaal. लेकिन उनका फॉर्म इस सीजन फॉर लिवरपूल hasn't been the best. Now granted, इसमें assumption ये है कि you typically end up carrying on the form that you have for your club into the World Cup, which might not be the case. जैसे Sterling को देखो, form इतना अच्छा नहीं था, but he still ended up bagging a goal and looked very impressive today, है ना? लेकिन उनका फॉर्म इस सीजन लिवरपूल के लिए थोड़ा कंसर्निंग रहा है, स्पेशली कंपेयर टू व्हाट ही इज डन इन द लास्ट फ्यू सीजंस. काफी लोग कह रहे हैं कि इस सीजन ही इज लुक्ड अ बिट टू कंप्लेसेंट. नाउ ग्रांटेड, आपको एज अ डिफेंडर, एज अ प्लेयर, वो कामनेस मेंटेन करनी पड़ती है, एंड ही इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस कूल काम कस्टमर्स एट द बैक. लेकिन कई लोग कहते हैं कि ही इज बिकम अ बिट टू कंप्लेसेंट, ऑलमोस्ट एज इफ यार ही डजंट केयर ऑल दैट मच, थोड़े ज्यादा ही नॉनशलांट हो गए हैं एट द बैक, बिकॉज ऑफ व्हिच ही इज मेकिंग सम रेकलेस मिस्टेक्स, सम केयरलेस मिस्टेक्स जो वो प्रीवियस सीजंस में कभी कमिट नहीं करते थे. So that's my take. But what do you think of Van Dijk, and how have you assessed his performance for Liverpool during the first half of the season? So I kind of agree with you. I do agree with you that he has been a little casual or whatever you call it. But then again, there has not been great support from his defense as well. You look at the injury concerns that Robertson had in the start of the season. Beach mein Arnold was out. You have Gomez, you've got Matip, you've got Konate, you've got 3-4 players playing with him. So that by the time he can actually develop a partnership with someone, he's injured or he's replaced or he's suspended for some reason. So एक वो भी factor उसमें आप consider कर सकते हैं. But if you speak individually for Van Dijk, he has underperformed from his from the expectations and the potential that he possesses. उससे तो उसने काफी average performance किया है, and वो team पे भी दिख रहा है. अगर आप team का भी उसका position देखेंगे ना, तो काफी नीचे है वो ब्राइटन से they are losing to Brighton. I think they drew to Brighton. They lost to I think they lost to Leeds as well. So they've been losing to very middle mid-table teams. So it's a very bad start for Liverpool. But I think जब आप country के लिए खेलते तो it's like a fresh start. And I think what we saw with Maguire as well. Harry Maguire not starting a lot of games for United, but here he came, and I think he is a different entity. Like you said, now Fabio Cannavaro ही है. जब वो इंग्लैंड का कपड़ा पहनता है ना, पता नहीं खुद को आईने में पता नहीं अच्छा 6 पैक का 12 पैक होता है, क्या हो जाता है उसको. अलग ही उसके अंदर आयरन मैन का सूट पहन के खेलता है वो, काफी अच्छा खेलता है वो. So I think that can happen with Virgil van Dijk as well. A lot of expectations from him, so hope he doesn't disappoint us. और he's playing his 50th match also Netherlands के लिए, तो ये एक माइलस्टोन है. So congratulations to Virgil van Dijk. आपने कहा कि Liverpool hasn't had the best of starts to the season, and of course it's very obvious for all of us to see. आपको क्या लगता है, what's the reason behind that? Is it primarily कि अच्छा उनका system change हुआ है, अब डार्विन नूनियस खेल रहे हैं, साडियो माने ऑफ कोर्स चले गए हैं, लिवरपूल को सिस्टम चेंज करना पड़ा, एंड टिपिकली जब भी आप कोई ड्रास्टिक चेंज करे सिस्टम में तो थोड़ा समय लगता है आपको अडेप्ट होने में. So do you think it's because of that solely, or do you think it's perhaps some big players underperforming, or a combination of many factors? Like you said, it's a combination of many factors. I feel it's that way because teams like Brighton, Leeds, these teams have actually gotten better and better and better after every year. You can see that they've added new players. अभी कल काइसीडो करके थे एक जो इक्वाडोर के लिए खेल रहे थे. Right. So he started and he's playing for Brighton. You've got Trossard who's in the Belgian squad, who's a Belgium के squad. तो सारे अच्छे प्लेयर्स हैं. वो ये छोटी टीम्स में खेल रहे हैं. हम इनको टीम छोटी समझ सकते हैं, पर ये प्लेयर छोटे नहीं है. तो आई थिंक ये एक चीज है जो लिवरपूल अडेप्ट नहीं कर पाई है. उनके लिए ट्रांसफर विंडो इतना खराब नहीं था. डार्विन नूनेज इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही हैज स्कोर्ड इनफ गोल्स. वो तो क्योंकि उसके गोल्स ऐसे है कि 3 ऑल में उसने 1 गोल मार दिया है, 2 गोल मार दिए, तो मैच पे इंपैक्ट नहीं ला रहा वो हैलैंड जैसा. बट देन अगेन डार्विन नूनेज हैज परफॉर्म. बट अगेन इंजरी ऑफ लुइस डियाज. जब तक आप मैच जीतोगे नहीं तब तक आपका यू डोंट कम आउट एज अ हीरो. हाउएवर कितना भी आप अच्छा खेल लो,
regardless of how good you are as a team. But until and unless you're not winning games, I think that is where Jurgen Klopp steps in, and that is where the temperament or the mentality needs to change in the dressing room. I don't know what it is. What's the concern? Of course, that's the dressing room talk, locker room talk. We can only speculate. But we just hope that gets sorted soon, because I have a lot of Liverpool fans who cannot believe it. 2 साल पहले चैंपियंस लीग जीते, लास्ट ईयर प्रीमियर लीग जीते 2 साल पहले, अभी चैंपियंस लीग फाइनल में आए थे, they were running for Premier League contentionship. अभी ये लोग mid table में finish कर रहे, they don't know what to do, where to go. So I think it's just one of those slumps that they're facing. और आपको क्या लगता है, ये एक बस एक छोटा सा ब्लिप है जो टेम्पररी है, कि हो सकता है ये जो उनका पुअर फॉर्म है वो और भी काफी दिनों, मे बी सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में भी बरकरार रहे? Good question, but I think Liverpool can come back. I'm not saying they will be title contenders this season. I am far away from that particular comment, but I think that they will come back from it. अब इससे क्या खराब हो सकता है? आप ही समझो ना, आप 10th या 12th हो टेबल पे, इससे क्या खराब कर सकती है लिवरपूल? I believe Liverpool at least relegation battle तो नहीं लड़ेगी, इतनी तो खराब नहीं है वो टीम. And it's just a matter of fact, मोहम्मद सलाह है, you've got great players, लुइस डियाज भी ठीक हो जाएंगे, you will have Thiago, you'll have Fabinho, all of them step up. So I think it's just a matter of time. It's just a matter of a little confidence, because we know Liverpool is like Robin Hood यार, अमीरों से लेके गरीबों को देता है वो. उसने सिटी को हरा दिया, अच्छे टीमों को हरा दिया, और वो गरीब टीम से हार गए. मतलब nothing against Leeds and Brighton, but in the Premier League battle, that is not the team that is title contender. You're beating a Manchester City, keeping a clean sheet at Anfield, and then you're losing to Leeds at Anfield. So that is a very contrasting result, and it was just the next game. ऐसा भी नहीं था कि 6 मैच बाद था, अगला ही गेम हार गया. तो ये बताते हैं प्रीमियर लीग में कितना कंपटीशन है. आपके लिए कंप्लेसेंसी का कोई मौका नहीं, जो आपने वर्ड यूज किया, कंप्लेसेंसी का या नॉनशेलेंट या लेड बैक एटीट्यूड आपका नहीं आ सकता. दिस इज द वेरी रीजन व्हाई प्रीमियर लीग इज वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड. और मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ. आई जस्ट थिंक इट्स अ ब्लिप, एंड एक्चुअली फील कि लिवरपूल अभी भी टॉप 4 के लिए दावेदार है. एंड आई एक्चुअली वुडंट बी सरप्राइज्ड if they end up somehow miraculously end up getting the 4th spot, क्योंकि Jurgen Klopp अपने players को mentality monsters कहते हैं, and I think Liverpool की maybe वो थकान हो सकती है या एक aberration हुआ होगा first half of the season में, लेकिन I think उनकी mentality बहुत strong है. The likes of Andy Robertson, Mohamed Salah, and I actually feel कि they have it in themselves. They have enough quality to maybe end up bagging like a top 4 finish by the end of the season. उनका I think जो final game था before the season broke for the World Cup, Tottenham के खिलाफ था, or maybe that could have been like the game before the final game, away from home, and they looked very impressive in the first half. 2-0 lead थी, they ended up winning that game 2-1, and towards the end, especially second half में Tottenham का एक बहुत अच्छा comeback था, but Liverpool looked quality in that game, at least in the first half, against a good Tottenham side playing away from home. तो जैसे आपने कहा, वो glimpses of brilliance हम लोग देखे, बस वो consistency थोड़ी missing रही है अब तक. They switched on against the better teams. I feel that they are much more prepared. I don't know what it's about, क्या है क्या नहीं है, but they are much more prepared when it comes to playing the stronger teams. And I think particularly कि Liverpool को ये season they if they just take one game at a time. I mean, I'm no one to say, of course, Jurgen Klopp knows better, but if they start taking one game at a time, and somewhere deep down, I think the defeats, the losing the title by 2 points, losing the Champions League final after being the favorite team, after dominating most of the game, you lose the final by a brilliance of one man, Thibaut Courtois. So it's very difficult to come off that as well. So कहीं ना कहीं वो भी I think must be playing in the back of the head. But I think अभी ये जो season start हुआ है ना, इसमें उनको come back करना चाहिए in the second half of the season. और any surprises जो आप देखे in the first half of the season? देखिए Brighton, उनका performance बहुत अच्छा है. Arsenal कोई debate ही नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें. सबसे बड़ी surprise. But do you actually think, Yash, उनमें दम है, क्षमता है to win the title? देखो, आर्सेनल का मेरे को सिर्फ एक ही कमेंट है. They need क्या बोलते हैं अभी, गैब्रियल हेसुस है, मार्टिनेली है, साका है, ये इनके टीम और ओडेगार्ड है. ऊपर के 4 ये प्लेयर हुए उनके 4-2-3-1 में, ये आगे के 4 हो गए ना 3-1. तो ये 4 में से अगर कोई इंजर हो गया, गॉड फॉरबिड, तो रिप्लेसमेंट कौन है इनका जो स्टेप अप कर सकता है उस लेवल पे, उस कैलिबर पे? यू गॉट एन टिकट या जो मैं कह नहीं सकता उस क्वालिटी का होगा. एमिल स्मिथ रो हैज नॉट बीन प्लेइंग गेम्स, सो यू डोंट नो whether they have the replacements for it. And the way they are playing, I am quite sure if there are injury free season hua, they can win the title. We've seen Leicester do it, we've seen Leicester beat them, we've seen a very average City win it when they played that year.
they were not the best Manchester City, like the game that they played, but they beat Sir Alex Ferguson's Manchester United. So of course anything can happen, and football तो ऐसा sport है भाई, कुछ भी हो सकता है. अगर एजवाल आई लीग जीत सकता है 2016 में against all odds, तो फिर I think ये आर्सेनल तो प्रीमियर लीग जीत सकता है definitely. Right. और डाली ब्लेंड फॉर्मर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर जो लुई वैन हाल के अंडर खेले थे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई थिंक ही वाज वन ऑफ वैन हाल्स फर्स्ट साइनिंग्स जब यूनाइटेड में थे. उनका ये 95th अपीयरेंस है इस मैच में, एंड दैट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ appearances for Netherlands amongst all the players who are playing in the Dutch squad. तो बड़ी experienced player है. उनके father Danny Blind, I believe, used to play for the Dutch team as well. Used to play for Ajax. Danny Blind and Dali Blind, his son, making his 95th appearance for the Netherlands. Daley Blind का I think मेरा best memory अनुभव वही है जो उसने पास डाला था रॉबिन वैन पर्सी को, और वो जो उड़ता हुआ हेडर मारा था रॉबिन वैन पर्सी ने. आई थिंक वही मेरी एक बेस्ट मेमोरी है डेली ब्लिंड की. और वो 2014 वर्ल्ड कप में भी आई थिंक दैट टाइम वो ऑब्वियसली वाज रिलेटिवली यंगर एंड वेरी रॉ एंड टैलेंटेड. ऑफ कोर्स ही वाज टैलेंटेड. आप देखेंगे तो उस वर्ल्ड कप में भी ही वाज नॉट द की प्लेयर फॉर नेदरलैंड्स. इन दिस वर्ल्ड कप एज वेल यू माइट नॉट थिंक ही इज द की प्लेयर फॉर नेदरलैंड्स, पर उनका जो रोल है ना वो इतना इंपॉर्टेंट है इस टीम में. He's like those unsung heroes. Right. लिवरपूल की बात करो तो जेम्स मिलर हो गया. आप यूनाइटेड की बात करो तो जैसे फ्रेड या मैकटॉमिनी जो भी मिडफील्ड में खेलते हैं, थैंकलेस जॉब है भाई इनकी. भागते रहो, गधा मजदूरी करो, लेकिन एंड में क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, लेके कोई और जाएगा. आई थिंक डेली ब्लिंड डिजर्व्स अ लॉट मोर रिस्पेक्ट. अंडररेटेड प्लेयर है बड़ा वो. So I think it is time that he gets paid the dues that he's been giving for all these years. अभी वो कहाँ खेल रहे, किस क्लब के लिए खेल रहे हैं अभी? आई थिंक ही इज प्लेइंग फॉर Ajax, राइट? Ajax के लिए खेल रहे हैं ना. आई थिंक ही इज प्लेइंग फॉर Ajax, क्योंकि डेली ब्लिंड इस सर्किट में तो प्रीमियर लीग में तो कहीं नहीं है. आई डोंट फॉलो द डच लीग, so I don't know much about it, but I'm assuming that he plays for Ajax. क्योंकि जो भी अच्छा प्लेयर आता है नेदरलैंड्स में, मैं Ajax से उसको एसोसिएट कर लेता हूं सीधा. इवन बर्गवाइन वहां से आया है. ये सब अच्छे अच्छे प्लेयर वहीं के हैं सारे. हाँ Ajax के लिए खेल रहे हैं. आपको याद है एक प्लेयर हुआ करता था, क्लास यान हुंटेलार. Oh yes, Huntelaar, Netherlands के लिए खेलता था. Yes, I know. He also played for, I think he played for a German club. What was the name of the club? I don't remember. He played for a German club. I think Schalke. You're right. Schalke. Yeah. Schalke के लिए. I have seen a few of his goals. वो बंदा थोड़ा सा पागल था यार. Exactly. इसलिए मुझे याद आया. हाँ. उसने ना आसान गोल कोई मारे ही नहीं है. Exactly. देखे ना उसके गोल, उसके बंदे ऐसे टैप इन्स या एक को कट नहीं, वो ऐसे दूर से बॉक्स यार वॉली मारेगा, सीजर किक मारेगा, कुछ अजीब सा ही करेगा. वो बड़ा अतरंगी प्लेयर था यार. Exactly. मुझे आई डोंट नो इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, बट आई थिंक उनका एक स्टिंट मैड्रिड के साथ भी था. जी लोन स्टिंट या परमानेंट होगा. नहीं, he was on loan, maybe 1 or 2 seasons. He was on loan for a year or so with Madrid. I remember. This is just Ronaldo जब नया था, आई थिंक उस टाइम की बात है. उसके जस्ट पहले उसी पीरियड की बात है. जब जस्ट रोनाल्डो मैड्रिड गया था. बट यार टेलर क्या याद दिला दिया यार. वाओ. बहुत पीछे ले गया. हाँ, जब रोनाल्डो मैड्रिड आया था, मरीनियो ही मैनेजर था कि कोई और मैनेजर था मैड्रिड का? तभी कौन था मैनेजर? मोरिनियो तो नहीं था. मरीनियो नहीं था ना? और सर नहीं था. नहीं. अच्छा, आई थिंक वो था कपेलो था क्या? फैबियो कपेलो था. आई डोंट नो. कुड बी कपेलो. आई थिंक कपेलो था, बिकॉज़ आई नो मरीनियो नहीं था. मरीनियो आया था फर्स्ट सीजन, एंड वो मुझे इतना याद है क्योंकि चैंपियंस लीग हराया था ना चेल्सी को, तो वो बहुत बड़ा वो काटेगी टक्कर और ये सब हमारे जो स्पोर्ट्स चैनल है इंडिया के, दहशत, खौफ और ये सब विनाश लिख दिया था. ऐसा बड़े टाइटल्स दे दिए थे उस पूरे क्या बोलते हैं पार्टनरशिप को. बट आई थिंक रोनाल्डो हैड अ डिसेंट स्टिंट विद मोरिनियो एज वेल. आई थिंक ही हैड स्कोर्ड ओवर 50 गोल्स इन द calendar year. Oh, more than decent yaar. Like if you look at his entire Madrid record, he scored more goals than the number of games that he's played, and he's played about 360 games for Madrid. For a club like Madrid, आपका वैसा record है, it's absolutely imperious. Cristiano Ronaldo. Absolutely. और इसी बात पे अब Yash will take a slight break. Pallab da is back on the menu for us. Pallab da, आपका असेसमेंट अब तक 28 मिनट 29 मिनट खेले गए हैं इस मुकाबले में. अभी 0-0 है सेनेगल और नेदरलैंड्स के बीच में. बट कैसा मैच रहा है अब तक? Who do you think has been edging the contest so far?
अनुभव, मैं तो ऐसा स्टार्ट करूंगा कि मेरा एक धुन गूंज रहा है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, क्योंकि इजिप्ट इज मिसिंग हियर। और अफ्रीकन नेशंस कप में आपको याद होगा शायद, पेनल्टी मार के सादियो माने ने लिवरपूल फ्रेंड्स एट दैट टाइम उन्होंने इजिप्ट को बाहर डाला, आपको याद होगा, एंड दे क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप। सो आई मीन, जोक्स अपार्ट, यस, it was a great thing. Again, people like, if you have Mo Salah on the World Cup के लिए आप अगर उनको देखेंगे, उनकी क्वालिटी और स्किल जो देखेंगे, राइट से कट करके इन्वर्टेड पोजीशन से इतने सारे गोल डालते हैं फॉर लिवरपूल, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ टैलेंट्स, मैं ऐसा ही कहूंगा। यस, सो फार इट वुड बी ऑलवेज अ वेरी मेजर्ड अप्रोच, क्योंकि आप जो जानते हैं लुई फान हाल के बारे में, उनकी अप्रोच एकदम मेजर्ड होती है, इज पिन पॉइंटेड, and he absolutely goes quite well. On the other side, Aliou Cisse is one who जो एकदम they are called the Lions of Tiranga, the Senegalese, and they have always काफी जगह में they have sprung a lot of surprise उन्होंने की है। एंड टॉकिंग अबाउट नेदरलैंड साइड, इन्होंने बड़े जो पैमाने में जितने जगह में पहुंचने का था उनको, दे हैवंट डन इट। आप क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहते हैं, आप नेदरलैंड को बात कहो, सच टैलेंटेड, दे हैड गॉट 2 गोल्डन जनरेशंस, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हैवंट won it on the big stage. This is a team who hasn't won the World Cup. आपको ख्याल करो, देखो। So I mean, they should have done it with so much of talent in abundance. मैंने थोड़ा सा पहले सुन रहा था, you're talking about Ajax and whatever. Ajax brought in a concept called total football. In the Dutch vocabulary, it's called total voetbal. So I mean, that is a way, every player changes position. So इतने सारे वो फुटबॉल वर्ल्ड को दिए हैं, they given so many superstars. इनको वर्ल्ड कप अभी तक न मिलना बहुत ही बेइंसाफी है भाई। सर, तो आपको क्या लगता है, आपने चोकर्स के बारे में बात की, साउथ अफ्रीका के बारे में बात की, इज इट, आई नो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा, बट कैन यू कॉल द डच टीम द साउथ अफ्रीका ऑफ फुटबॉल, और कैन यू कॉल साउथ अफ्रीका द साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम? मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, देखो अनुभव, ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आई मीन दे हैड गिवन अस सो मच ऑफ आई एम a great fan of the Dutch football, I would say. अगर 70s से देखो तो they had shown the world what they can do, and whatever. I mean, look at the players. Johan Cruyff, my goodness, I mean, all time greats में उनकी जगह होगी, and he had so much of support from the others, तो इनको देख, I mean, they went on and on, but again, having qualified in the top period of it, they somehow lost. I mean, Czechoslovakia की बात सोचो, 76 यूरोपियन चैंपियनशिप में उन्होंने उनको एक्स्ट्रा टाइम में हरा दिया। So I mean, the people like Ruth Kroll, Jan Bled, and Win Schubert, and the whole team, Johan Neskens, you see, I mean, they just see the sheer quality. And iske baad mein, if you talk about again that golden generation, people दुनिया को उन्होंने दिखा दिया कि फुटबॉल कैसे हो सकता है, how could it be a total game, कोई फिक्स पोजीशन किसी को नहीं रहेगा, everybody playing everywhere, and great team. And then there was a decline in the 80s, I would say. और उसके बाद में देखो अभी in the second generation was from mid 90s, तो उससे चला, and you've got people like किसका नाम करे, Overmars, Philip Cocu, I was talking about Edgar Davids, great players, Frankie de Boer, Ronald de Boer, Patrick Kluivert, so all these great generation, but in terms of trophy, so they've always been underachievers in the big tournament. तो अभी इस में पारी है,
वर्जिल वैन डाइक और उनके टीम की लुई फान हाल की, दे हैव टू गो अ मेजर्ड अप्रोच, बट आई really don't know whether they can make it to the final, the final four, because क्योंकि हम विश्वास करना चाहते हैं कि दे हैव द एबिलिटी, हम चाहते हैं कि दे डू वेल, बट कभी वो टीम ऐसे है ना, वो भरोसा नहीं दिलाते हैं, समहाउ कभी कभी देखेंगे कोई फैमिली में ऐसा होता है, नाना बोलेगा या दादाजी बोलेंगे कि यही उसको बस भरोसा मत करो, उसको बाजार में कुछ लाने को भेजा तो भूल जाएगा शायद, या खेलने को चला जाएगा, दूसरा जगह जाएगा. सो इट्स लाइक दैट, दे ऑलवेज प्ले ट्रेंड व्हेन it comes in terms of getting that killer instinct right at the right moment at the right tournament. तो ये नहीं होता है, नहीं हो पाया. So hopefully this happens, but again this side is right now having a little bit of issues. उनको लुई फैन हाल को टीम को लेके काफी काम करना पड़ा. Dumfries, he's got little problem. Memphis Depay is carrying injury. तो अभी I don't know what's really going to happen. और सर वैन हाल के साथ ही एडगर डेविड्स बैठे हुए हैं, आपने उनका नाम लिया, लेजेंड फॉर क्लब एज वेल एज कंट्री. Is there any specific reason as to why Edgar Davids is always wearing glasses? वो अभी भी डार्क ग्लासेस पहने हैं, जब खेलते थे तब हाँ, भी वो काफी खेलते भी जो थे उनके एक स्टाइल स्टेटमेंट थी, हमने ऐसा ही सोचा, बट आई थिंक ही इज गॉट लिटिल बिट ऑफ इश्यूज. आई मीन इट इज नॉट रियली बीन रिसर्च तो हुए होंगे डेफिनेटली, बट आई डोंट नो रियली व्हाई ही ऑलवेज यूज्ड टू वेयर दोस ग्लासेस. देखो, ग्लास पहन के काफी सारे खिलाड़ी खेल चुके हैं, इवन इन क्रिकेट. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, if you see our Bengal's Dada Saurav Ganguly, he also used to wear glasses. Then he went and shifted to the sort of this thing, जो power less होती है, contact lens. But again he felt problem with the contact lens because उनकी सारे काफी चर्चा करना पड़ता है. You have to clean that, keep it in the पानी में डालना पड़ता है, and at times players get itching. That's very important. इसीलिए दादा इतना ब्लिंक करते थे बैटिंग करते. नहीं, वो किसी को that's a habit, and people say that he blinks and the ideas crop up. तो ऐसे भी कहा जाता है कि that crops up with every blink of his, and which is within a nanosecond. वो बात अलग है. लेकिन अभी ये क्या होता है, important matches के पहले अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत आ जाए ना, आंखों में या कुछ इरिटेशन आ जाए, तो योर प्रॉब्लम विल बी लिटिल डिफिकल्ट. आई मीन यू क्रिकेट में कहो कि आप बैटिंग कर रहे हो, इवन इन फुटबॉल यू हैव टू हैव अ सॉर्ट ऑफ अ पेरिफेरल विजन. कहा जाता है कि वही खिलाड़ी सबसे बढ़िया होता है, ग्रेट होता है, जिसकी पेरिफेरल विजन बहुत अच्छा होता है. आप देख रहे हो यहाँ, लेकिन कहा जाता है somebody is like these days we are calling Surya Kumar Yadav a 360 player because of the array of shots जहां वो लगा सकते हैं. फुटबॉल में भी 360 डिग्री प्लेयर्स है. जैसा मैंने कहा आपको, रोनाल्डिनो, लियो मेसी, वो जानते हैं कि उसके पीछे में कौन एक थर्ड मैन मूवमेंट कर रहा है, कौन एक विदाउट द बॉल मूव कर रहा है. तो ये बहुत जरूरी है. So that is the reason you have to have a perfect eyesight. एक का मैंने पढ़ा था, I really haven't researched about that because at that time I was also a student, कि उनको थोड़ा सा he had a bit of a problem which is called the eyesight की जो तकलीफ होती है, ग्लॉकोमा बोलती है. आई बॉल्स के अंदर जो इंटरनल प्रेशर, हमारे जैसे ब्लड प्रेशर होती है, वैसे आई के अंदर भी प्रेशर होती है. तो ये प्रेशर का उसको बढ़ जाने का दिक्कत था, तकलीफ था. तो ग्लॉकोमा को प्रिवेंट करने के लिए शायद उन्होंने एक प्रोटेक्टिव, हाँ, उनको दो स्टाइल सेटमेंट था. एक तो ये ग्लासेस जैसा है, और वो लॉक्ड हेयर्स, या एब्सोल्युटली. सो एवं मान लो कि उनको लुई फान हाल के ही पीरियड में सबसे ज्यादा उनकी टैकलिंग क्वालिटी इतनी थी, कहा जाता था कि एडगर डेविड्स किसी को टैकल करेगा तो पूरा बॉडी एकदम हिल जाएगा, इतना पावरफुल टैकल था. उनको पिटबुल कहा जाता था. सो दैट इज हाउ ही वाज नोन. एंड राइट नाउ he is assisting his boss
अच्छा है, and the whole career he had a lot of time with the Ajax most of the time, and then went to Milan and then Juventus, thoda Barcelona and Inter, came back to EPL with Tottenham Hotspur, went back to Ajax. So that's how he did, and he was a brilliant player. I mean, I somehow loved him. हाँ. But मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी आप इतने सारे खिलाड़ी दिए हो, like Brazil, it's never ending. The players keep on coming. आप एक जनरेशन जाता है, दूसरा आता है, सो कौन बेहतर है, एट टाइम्स यू इन अ प्रॉब्लम, आप सोचते रह जाते हो कि भाई कौन बेहतर था, ये था कि वो था. तो इसमें भी ये बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी, ब्रिलियंट खिलाड़ी वो दे चुके हैं, लेकिन in terms of trophy, finally people will remember you because you win trophies. देखो अब इतने कंपैरिजन हो रहे हैं. अर्जेंटाइन जो है वो मैराडोना को इतना दिल के करीब क्यों रखते हैं? क्योंकि ही सिंगल हैंडेडली गिव ट्रॉफीज. ऐसे तो कैरेक्टर भी वैसे है, मेसी जैसे बिल्कुल चुपचाप नहीं. मेसी को वो ज्यादा स्पेनिश कहते हैं. they think that he is more a Spanish than an Argentine. और दूसरी बात यही है कि जब भी कुछ डिस्कशन होती है तो वो कहते हैं कि भाई बड़ा ट्रॉफी कहाँ दिया. हाँ, लास्ट ईयर he could get the Copa, that's it, defeating Neymar, but बाकी तो कहाँ ट्रॉफी आया. एक वर्ल्ड कप नहीं देने से, आई डोंट नो, दैट्स कुड बी द ईयर स्टिक कि भैया जो वर्ल्ड कप दिया है वही बेस्ट है. जो वर्ल्ड कप नहीं दिया, क्यों पेले को थोड़ा सा आगे रखते हैं? क्योंकि अ पर्सन इज इन द वर्ल्ड कप जो तीन बार जीत चुके हैं. 58 he came and people couldn't know who he is. 62 he was beaten to certain extent, he couldn't play, went out, but he was in the squad. And 70, I mean, they got the final Jules Rimet trophy. So that is the reason a person winning 3 World Cups, so you naturally become a एक all time great आपको कहा जाता है. So people not winning a World Cup is a problem. Qatar is also following that drinks break, after the first half, and maybe people getting, इनके टेक्नोलॉजी के बारे में भी काफी हम चर्चा कर चुके हैं. They were trying to beat the heat. स्टेडियम ऐसा बनाया कि वो थोड़ा सा एयर कंडीशन टेक्नोलॉजी है खिलाड़ियों की, और इवन दर्शकों जो गए हैं ना, स्पेक्टेटर्स, तो उनको भी ऐसा वो कूलिंग शायद करा रहे हैं. बट पीपल हु हैव गॉन देयर, हम उनसे बातचीत करते रहते हैं बराबर कल से, so they can also feel the heat. अभी गैलरी में बैठ के भी आपको हीट पता चल रहा है, तो then how the players are feeling, ये बात कहो, that is going to be a big concern. Right. Especially for the European sides. Exactly. लेकिन सर I don't know exactly, मतलब temperatures कैसे change होते हैं कतार में. I'm guessing एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद, once we're somewhat deeper into the winter season, तब temperatures गिर जाएंगे, और do you think ऐसे ही रहेगा, मतलब जैसे अभी temperatures है? भैया आप गोवा जा चुके हो. Now Goa is always pleasant in December, better in January. It's like that. There are some regions, which they call their winter. That's perfect. But उनकी विंटर जो है अभी ये यूरोप की एकदम कड़े समर जो होती है उसकी भी से ज्यादा हीट उसकी होती है. सो दैट इज इट. थोड़ा सा जो मैंने कहा, इनको ब्रेक दिया गया, एंड दैट कूलिंग ब्रेक, दैट थिंग स्टार्टेड इन 2014 इन ब्राजील वर्ल्ड कप. और जैसा मैंने कहा कि फीफा के स्टिपुलेशंस है कि whenever you're playing in a temperature more than 30 degrees Celsius, आपको खिलाड़ी को फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में मैंडेटरी ब्रेक होना चाहिए. That cooling break is very important. Otherwise, if you keep on playing, that might affect you. और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता, that causes not only सारे अपनी कोश जो है बॉडी के जो सेल्स जो है वो डैमेज सिर्फ नहीं होते, even you get a little problem on your brain as well. सर आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए क्विज क्वेश्चन है. आपने कहा कि सौरव गांगुली पहले शुरू में चश्मे पहनते थे खेलते समय. नेम 2 other cricketers who worn glasses while playing.
ये दर्शक को आंसर करने दो, लेकिन I can give you one great Pakistan batsman, always had worn glasses, and I can name another great Bengali who had an opening wicket stand जो काफी काफी दिन से अभी भी है. So I'm just giving clue, that's it. So I mean, let the people answer कि क्या है, कौन है. दोनों क्रिकेटर की ही हम बात किए हैं. So yeah, of course, they played with the specs and they were great batsmen. मैं ऐसा ही कर रहा हूँ. जैसे हाफ टाइम होगा 2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद, स्टॉपेज टाइम जैसे ही खत्म हो जाए, then we'll ask you to reveal the answer, sir. Yeah, I mean, let the people answer on our. Are we having a poll? हमारे की poll चल रहा है YouTube के. थोड़ा सा होने से तो अच्छा होगा. I would request the team Digital2 Sports to just start all these sort of quizzes and everything about football. थोड़ा सा questions करें और that will be great. Done. क्यों है मैंने कह दिया पहले ही, great batsman for Pakistan. The Q is Z. Okay. So now start guessing and let me give you the other Q. For the India, it's P, the Q. So chalo abhi Pallab P and that's it. So you can try and guess it. And मेरा कहने का मतलब है बहुत सारे सब क्रिकेट्स के बारे में, इंडिया इज अ क्रिकेटिंग कंट्री. आप मान लो जितना भी डिबेट करो तो सब बहुत ही जानते हैं. सो आई मीन दे वुड डेफिनेटली बी एबल टू आंसर, आई थिंक. लेकिन थोड़ा पुराने जमाने के हैं, अभी करंट नहीं है बिल्कुल. बट दे वर ऑल ग्रेट प्लेयर्स, आई मीन टेस्ट प्लेयर्स. तब तो कहाँ ओडीआई क्रिकेट था और कहाँ T20 या T10 था. तो लगता है अभी थोड़ा ही साल में T5 भी चालू हो जाएगा. सर आपकी पावर कितनी है आपके चश्मे में? वेल थोड़ा सा है. तो पढ़ते हुए इतना पढ़ाई किया कि यू हैड एंड मे बी दैट इज क्वाइट नेचुरल बिकॉज नियर विजन में कुछ तकलीफ होता है. सो यू हैव टू बी परफेक्ट एंड स्पेशली व्हेन डूइंग लाइव कमेंट्री. सो ये बहुत ही जरूरी होता है कि you identify the players, because in commentating the basic thing is to correctly identify the players. If you make a wrong identification, that in commentary is called cardinal offense. We are trained by a great producer of the BBC, chief producer of sports during the Asian Games. So he told us that one thing is very important: identify the players correctly. If you don't, I would beat you, while he was training us. So socho ki sab all grown ups, so unko bol rahe hain ki I'll beat you. That's the reason I don't name him, but he was a great thing. He's worked with the BBC for what long 40 years. तो उनके एक्सपीरियंस था, उनको लाया गया था for the Asian Games. 82 Asian Games. भारत में सबसे पहले well organized एक टूर्नामेंट था जहां पे हम it was a holistic approach. जिसके बाद में काफी टूर्नामेंट्स इंडिया होस्ट किए हैं, even the 2 under-17 World Cups, the Commonwealth Games and what not. हम क्रिकेट पे तो काफी टूर्नामेंट्स किए हैं, but that was one sort of a near Olympic. And क्यों नहीं हम कोशिश करेंगे कि in the future we could hold a full summer Olympic, or maybe I dream someday India holds a senior World Cup. पैसा लगेगा भाई, कौन देगा, कौन डालेगा, that's important. पल्लव दा देखिए आपके पास bags of experience है as a commentator, as a broadcaster, doing work in sports, perhaps work in other fields as well. Half time start होने वाला है, so I think we can maybe sway off topic a bit also, based upon whatever experience that you've gathered. And I'm asking this question क्योंकि हो सकता है काफी लोग comment section में है, काफी viewers है who might have aspirations to get into this field as well, like sports broadcasting. Some of your golden pieces of advice or your golden nuggets of wisdom मैं तो अभी तक वही पोजीशन में तो पहुंचा नहीं. Let me give you little details from the Thumama Stadium that Senegal को काफी प्रशंसा करना होगा. You have to give them credit कि उन्होंने
डच टीम को फर्स्ट हाफ में goalless रखा है, because we have seen in Khalifa Stadium, goal fest going on, 8 goals being scored. तो इसमें अच्छा है. And possession आप देखो, Dutch players they like the ball rotation, ball को पोजीशन में रखते हैं. इतना नहीं कि टिकी टाका जैसे स्पेनिश खिलाड़ी करते हैं या स्पेनिश नेशनल टीम करते हैं, लेकिन they have the little lion's share. But again, I can tell you one thing: this Aliou Cissé is a born fighter, and these Senegalese footballers are absolutely great fighters. So बहुत ही लड़ाई करते हैं, एकदम अंत तक वो लड़ेंगे. और मेरा कहने का मतलब है, they are starting as a favorite. This is the first time दो टीम मीट कर रहे हैं in the World Cup. So इसमें क्या होगा? If they can hold on, so that will be great thing. Even a goalless or a draw would be a great thing for the Senegalese team. Yes, of course, मैं तो इतना I'm not that great कि हम advice भी कुछ दे, लेकिन मैं जो करता हूँ, 2 things is very important. First, जिसको commentary या broadcasting में आने का है, थोड़ा सा पागलपन चाहिए. First, you have to love the game, have the passion for the game, have to watch it. हमको इतने ये करने का मतलब नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या ब्रॉडकास्टिंग का कुछ सीखने का है. नॉट रियली. इफ यू कैन वॉच द गेम, इफ यू हैव द पैशन फॉर द गेम, इफ यू लव द गेम, तब उसी में आपको ये धीरे धीरे आ जाएगा. क्योंकि स्टिल नाउ इंडिया इट्स नॉट लाइक इन ऑस्ट्रेलिया, इन इंग्लैंड, इन अदर प्लेसेस दैट कमेंट्री कैन बी अ फुल टाइम प्रोफेशन. हम भी सारे प्रोफेशंस मैनेज करके we have done the commentary. That's very important. But days are changing now. I know a lot of people with so many digital platforms, so many channels coming up, and so many new avenues opened up हो गए कि सबको अभी काम मिल रहा है, and you have a year-round work. So इसमें you can depend on the commentary and whatever. लेकिन हम लोग जब स्टार्ट किए थे और अभी भी जो कर रहे हैं, तो वी हैव आवर ओन प्रोफेशन. यू आर अ कंसल्टेंट इन माय फील्ड, इन मेडिसिन. काफी सारी चीज किया है. देखिए, पासेस बहुत ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है नेदरलैंड्स और सेनेगल की, सिर्फ 24 पासेस. सो दैट शोज सेनेगल भी इस गेम में है एकदम. दिस इज नॉट गोइंग टू बी one-sided thing. Right. So that is one thing I was talking about, कि आपको गेम का बारे में you have to love it. Second is, what is very important is you have to, अगर आप जब commentary करते हो तो उसका पहले कुछ भी गेम हो, however small game it is, no game is small, and be it a World Cup final or even a small local leagues match, do the homework. That is most important. We have also been trained by a great commentator. You must have heard him so many times, especially in the FIFA. He's called John Helm. He has always, taught us in 3 different phases. So what John does is what I do. I follow him. He does about 2-3 pages of research for maybe a day prior of any game. You will have every details of every player, some background, some interesting anecdotes, and everything noted down, because this is science. ये भी एक science है. मान लो आप कुछ देख के रहे हो, अब आप कोई जब बड़े परीक्षा देते हैं या एग्जाम्स देते हैं, तो आप क्या करते हैं? People take down notes or people write down, क्योंकि that's very important. आप जब लिखते हो, इसकी impression brain में रहती है. So that is important. In the meantime, we can tell you something that Senegal's goalkeeper Edouard Mendy has been rewarded with the best men's goalkeeper award of 2022. So that's a great news as well. And Mendy is one of the good shot stoppers. So note down everything. That is also important. So again, there's answer coming from Ishrat Amir on the YouTube. He said, yeah, it's Zaid Abbas. Zaid, yeah, great. One of the best batsmen which Pakistan has produced. I mean, I rank always Majid Khan as the best stylish batsman of Pakistan. Haven't performed that very much, but Majid Khan had the real, class and the touch and whatever. But Zahir Abbas, just see the amount of
the matches he has played, and who scored again in Zahir Abbas, India's was nemesis, I mean, he scored most runs again against India, of course. Yeah, very true. So, people are aware, and देखिए फुटबॉल की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एडगर डेविड से हम कहाँ पहुंच गए, हम थोड़ा भटक भी रहे हैं, बट लेकिन दिस इज अ गुड इंटरेस्टिंग सेशन भी हो रहा है, तो शायद जो जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छा लग रहा है, एंड लेट देम पार्टिसिपेट। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा डिजिटल टू स्पोर्ट की कि आप सबको इंक्लूसिव, आपको सबको इंक्लूड कर लें, और लेट देम आंसर, लेट देम पार्टिसिपेट, दैट विल बी गुड। मैच स्टैट्स थोड़ा बता दीजिए अनुभव, जो हमसे जुड़े हुए हैं। राइट पल्लव, तो काफी नेक इन नेक है मैच स्टैट्स। ऑफ कोर्स 0-0 अभी हाफ टाइम में। सेनेगल के 6 शॉट्स कुल मिला के, नेदरलैंड्स के 5, सेनेगल का 1 शॉट ऑन टारगेट आउट ऑफ द 6, नेदरलैंड्स विद नो शॉट्स ऑन टारगेट, बट नेदरलैंड्स विद आर्गुएबली the most clear-cut opportunity so far, जो I believe Frankie de Jong के पैर पे पड़ी, but he ended up not being able to capitalize. Possession भी more or less in the balance, Senegal 47%, Netherlands 53%. Passes का stat आपने already explain कर चुका. Pass accuracy 85% for Senegal with 169 passes attempted in total. Netherlands 191 passes attempted, 85% pass accuracy. 8 fouls committed by Netherlands, 4 fouls committed by Senegal, and corners में it's 3 apiece. So fairly 50-50. और पल्लव दा, जैसे आपने कहा, based upon whatever we've seen in the first half, second half भी promises to be a closely fought contest. Will be very interesting, very interesting. और जैसा मैंने कह रहा था कि Alan Cisse is one who never gives up. They've gone with again a 4-5-1 formation. This is what ज्यादा तक देख रहे हैं अभी देखो, again England started with a 4-5-1 formation, but again they always moved up the 2 link midfielders up and across, and all the wing people were going, and that's typical English को pattern है, जो wing से वो crosses डालते हैं, and they head in, so it's always been that amount of pattern which has always been followed. अभी ये Senegal team भी 4-5-1 pattern में start किया है, and Louis van Gaal is always preferred combination as well, plays with the 3 central backs, and then the 5 midfielders with the 2 wing halves. They operate as a sort of a wing back, a dual role, और वो channel से बहुत अच्छे movements वो करते हैं. So that is the way they have done it, but little bit into the depth of the stats अगर हम भी बात करें, पोजीशन का तो हम बात कर चुके हैं. There has been about on target shot only in 1, and that too it has come in favor of Senegal. So I mean in that way they are also looking up. थोड़ा सा वो भी ऐसा आंख में आंख डाल के वो लड़ रहे हैं. So that is very very good. और इनसाइड पेनल्टी एरिया से उन्होंने 2 मूवमेंट की, अच्छी 2 मूवमेंट्स हमने देखा है, और इसमें डच साइड ने 3 मूवमेंट्स की है फ्रॉम इनसाइड द पेनल्टी एरिया, बट अगेन कन्वर्शन रेट अच्छा नहीं रहा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप इस स्टेज पे जब पहुंच चुके हो, इस मंच पे, आपको कन्वर्शन जितना बेहतर होगा, आपको रिजल्ट्स और आगे बढ़ने की आपको चांसेस उतनी बढ़ जाएगी. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी सेकेंड हाफ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो होल्ड कर सके फाइनल वक्त तक, इट विल बी अ ग्रेट क्रेडिट फॉर द सेनेगालीज. फ्रैंकी de Jong is the first half today, 49 touches, 40 passes, 2 dribbles, 1 clearance, 2 blocks. उनकी touches तो अहम है, and he can make things happen. So ये भी एक हम नजर रखेंगे कि अब इससे कैसा हो सकता है, and what really they can do. सर अगर सेनेगल को बोला जाता before the start of the match will finish 0-0, would they have taken it? भाई as far as I know, Cisse, he would never give up. As I am telling you, बहुत ही लड़ाकू है, बहुत लड़ते हैं, and you've seen in his career as well. So they should be
going for it, going for the kill. और शायद डच टीम के अगेंस्ट में, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट में अगर वो अपना ए गेम ला सके, so that will be great. They have got the great players. I mean, Captain Koulibaly, he's got so much of experience. They've got the Pape Abeu Cisse. So, I mean, missing, of course, Sadio Mane. But the other players that they're playing in across the world in the best clubs. तो इनकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे ऑपोजिट साइड में नेदरलैंड्स है, मैं अपना धूम हिला के भाग जाऊं, ऐसा तो नहीं है. They'll make a great fight out of it. And you just see the career of the coach. He's always, I told you, he's very, very aggressive. And you must be knowing that he was a midfielder converted into defender, this Aliou Cisse, and he played in all the good clubs. He started with Lille in France. So uske baad mein he went to the PSG and then Birmingham City, Portsmouth. So I mean, he and also has a great career with the national team. और उनको सब बहुत मानते हैं. He has been with the age group team also with the Senegal side. तो ये सारे खिलाड़ी जो अभी का है, this is again a generation which could be fading away. Maybe like Koulibaly and all the other people, could be next World Cup you might not find them. So I mean, again, whatever achievement they have to do has to be done maybe in this World Cup. They have sprung some surprises, especially tournaments में काफी बार उन्होंने कुछ surprises की है. But I think this time it should be the best that they can reach in the World Cup. And 3 बार पहुंचे. 2002 they reached first time, and in 2002 they reached the quarterfinals. So abhi they should be trying, and making to the next stage. Group stage से आगे अगर बढ़ पाए, तो I think that will be very good achievement without keeping in consideration कि भाई सादियो माने नहीं है उनकी स्टार खिलाड़ी. सोचो कि ब्राजील में नेमार नहीं है और टीम अच्छा किया, मूव किया, ट्रॉफी जीत गया, तो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट. सो दिस आर द स्टार पीपल ऑन अराउंड. उनके ऊपर में ही, उनके भरोसे में ही, उनकी न्यूक्लियस में ही एक टीम बनती है. और सर थ्रू आउट द चैट आपने काफी फन फैक्ट्स शेयर किए. वी हैव टॉक्ड अबाउट लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स एज वेल. लेकिन ये एक नॉट सो फन फैक्ट है Netherlands के दृष्टिकोण से. In fact, it's a dubious distinction and not a record. The Netherlands have failed to record a shot on target in 4 of the last 6 World Cup fixtures in the first half. तो सर ये तो एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि Netherlands अच्छे प्लेयर्स है. And it's मुझे यश की बात याद आई. यश talked about the fact that उनको लगा कि नेदरलैंड्स में कंसर्न एक ये है कि उनके पास कोई फिनिशर नहीं है, क्लिनिकल फिनिशर नहीं है, कोई आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है. बर्गवाइन भी विंग्स में खेलते हैं. वेरी 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 करेक्ट, वेरी गुड असेसमेंट. उन्होंने एकदम करेक्ट असेसमेंट किया है उन्होंने. जस्ट एब्सोल्युटली. एंड you all are great. I mean, you are doing a great bit of analysis as well. So by the end of the tournament, आप शायद अभी करो ऐसे AFC C and B license की application कर दो, डाल दो, and you'll pass. No problem about it. Yeah, of course, Frankie de Jong has to go on and make more passes in the defining attacking third. You have Dumfries. Yeah, okay. Denzel Dumfries can go forward. And you're talking about the Dale blend. Yeah, he can also, meet the crosses. That's okay, but absolutely correct. They don't have a very positive striker, maybe like Ruud van Nistelrooy, or maybe, in that kind, or not even to the class of Arjen Robben, making inverted runs from the right and then cutting back and scoring from the left foot. Or they're still missing a player of the caliber of Wesley Sneijder. Midfield say, how you see the number of goals he have scored from long distance from the midfield moving up. So I mean, these goal conversion and that part is, of course, a little bit missing. Yeah. और सर फैंस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए एक क्वेश्चन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेकंड हाफ. टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द सेकंड हाफ टू लुक लाइक. डिटेल में बताइए. Explain how you see the game progressing, and also tell us what you think the final scoreline will be. Sir, while they are answering this question, I'll very cheekily
put forth the same question to you. How do you expect the second half to play out? And what do you think the final score will be in this matchup? I expect some surprise. थोड़ा सा चमक लग जाए, थोड़ा चमत्कार हो तो अच्छा है. But again, let the people who have joined, let them have fun. उनको थोड़ा मजा लेने दो. Let them make all sort of predictions. और ये तो अभी ये शो games होती हैं और everybody people making predictions, starting 11 and whatever the results. So सब जो Digital2 Sports पे जुड़े हुए हैं तो मजा भी ले रहे हैं. Waking up in the night, okay, थोड़ा और night और भी deep होगा और गहरा होगा और हम तो बात गपशप करते रहेंगे, ट्रिविया देते रहेंगे. But again, let them make some guesses and I wouldn't be really surprised. हम तो एकदम चौकन नहीं हो जाएंगे कि if Senegal can pull up a surprise, because this side is really having that capability. Senegalese team के है without Sadio Mane. ये हम ध्यान में रखते हुए भी बोल रहे हैं कि they can do and they can really hurt this Netherlands side. Kyunki they are not converting goals. That's very important. So have a lean period in as terms of scoring goals. Sir, वैसे अब अभी बैठे का है? Are you in Calcutta by any chance? Yeah, I don't know where I am because you're traveling in different areas. I mean, because doing different type of tournaments simultaneously. I just came in from Mumbai this late afternoon and just joined you. So and would be traveling, across the length and breadth of the country, covering tournaments. And again, coming back here will be the great fun, and I love being here with all you excellent guys. Yep. Sir, when you're traveling so much, traveling extensively, you're traveling the length and breadth of the entire country, जैसे आपने कहा, it must be tiring, but you still do it with a smile on your face, with so much passion. You love it. So much effervescence. Any broadcaster who wants to excel in his area or whatever in his domain has to have little bit of passion for the game, number one. और मैं तो ऐसा कहता हूं कि आपको थोड़ा सा पागलपंती भी रहना चाहिए. You should be crazy about the game, and then this traveling is a sort of I would say थोड़ा सा ये icing on the cake that you are moving and just not static in a position. आप move कर रहे हो, आप बराबर you are keeping on meeting new people, new players, new tournaments and whatever. तो आपको ये अच्छा लगता है and you should love it. That's it. आप किसी ने कहा था शायद आई लीग में आइजॉल की चैंपियनशिप के बारे में पिछली बार जब आप बात कर रहे थे. Yes, that was यश ने कहा था. Yes, यश ने कहा था. Yes, that was a great victory that Khalid Jamil bhai could do, and he worked so passionately with the Aizol boys. And just check it, these that batch was the golden generation of the Aizol boys who have all mostly excelled, and right now they're doing great in the top level of the Indian football, in the top tier. तो यानी कि जब आप बराबर जैसा हम इंग्लैंड मैच में बात कर रहे थे कि आपको यूथ लेवल से नर्चरिंग होना चाहिए, गर्नर करना चाहिए टैलेंट्स, ऐसा इंडिया में भी अगर आप कोशिश करें तो इट विल बी गुड. Aizol has a good nursery and great supply line of footballers. In Mizoram you have an unending supply. खिलाड़ी आते रहते हैं from different clubs. Same in Manipur as well. So I mean they are the two main suppliers right now. And look at the Indian national side and the top tier teams, franchises ke teams. आप देखो, most boys from these two regions, Manipur and Mizoram. Absolutely. Sir, देखिए, always a pleasure sharing the virtual stage with you. Or this is not the last time. I'll be back with you for the third match, USA versus Wales. फिलहाल yeah, थोड़ा जाग के रहना difficult है, but we have to keep awake again. Yeah, because Welsh and USA playing. Yeah, of course. एक तो passion है which will keep me awake, and थोड़ी black coffee. Yeah, you have to have that. Again, don't put so much of caffeine into it.
तो that also hurts. तो उसके बाद में क्या होगा, आपको रात में finally जाके आप सो नहीं पाओगे. But again, okay, cool down, enjoy and relax, and love the game. That's it. And now I think Yash, it's time for him to welcoming back. भैया क्या कर रहे थे बीच में? Finished your dinner and what? Had a lovely dinner? Had a lovely dinner, had great food, and I was watching your show. You were talking, like we spoke about Ezwal, and my ears and eyes just lit up because I'm a very big fan of Indian football, and I followed the I League and the ISL very closely for the last few years. So I was watching this Ezwal story. So it's nothing short of a miracle. It's as good as the Leicester dream that they made. I think even better, because in the position that the club was in, the club owner Robert, I heard a lot of stories. I read his interviews as well. They were having a lot of troubles. They were on the verge of they had gotten relegated as well the season before, but then something helped and something happened and they were given a chance in the I League. But what a story, Pallabda. Yes, Robert is a very good friend of mine, and I had been there, been with the entire tournament, and most of the matches I were commentating from the stadium top, Rajiv Gandhi Stadium, and that had only a western gallery. The eastern side is beautiful pictures, the hill and people sitting on the hilltops and watching the game for free, and it's lovely. It's spectacle. Yeah, you must have been there. So and the composition was at the roof of the stadium, so you had to sort of climb up like climbing the Everest, but it was marvelous experience. And I've been there most of the matches of the I League that season, and saw how Khalid Bhai worked with the boys. And as I told you, I mean, that was a great generation which came out, and now they have all बहुत ही अच्छे जगह में पहुंच गए हैं, and they're playing great. So थोड़ा सा stats भी दे दे. Senegal in 2022 has played 16 matches and won 11. As I told you, Cisse is one very aggressive minded coach, and he never would be taking a beating, he wouldn't be beaten down. So he is one who will always fight, and I wouldn't be surprised if उन्होंने आज नेदरलैंड्स को, हम जानते नहीं है कि इसमें काफी हजार सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो इसमें कितने फैंस हैं डच फुटबॉल के. हम तो बिल्कुल हैं ही. एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दोस जनरेशंस, द टू गोल्डन जनरेशंस. लेकिन अगर वो होल्ड कर पाएगा, दैट विल बी अगेन अ गुड रिजल्ट फॉर सेनेगल. शॉट इन द आर्म उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा. Absolutely, Pallab. And Netherlands is known to produce legends. वो लोग average players produce नहीं करते. अब योहान क्राइफ की हमने बात की. I have a name that is been forgotten for people like us. His name was Marco van Basten. I'm sure you. Oh, of course. I mentioned that. Yes, yes. Marco van Basten. Even you come down to Patrick Kluivert and why not Ruud van Nistelrooy and all these people. I mean, it was a great, two generations and the greatest footballers, and all genius, I would say. As in the 70s, they showed late 70s that what a total football could be. The world, was surprised absolutely. But then a lot of teams have tried to emulate. उन्होंने उनको copy की, उनको follow की, and some researchers say that the Spanish tiki-taka was derived, a part of it, from that total football concept, because there was no fixed position. कोई खिलाड़ी ये right back, ये left back, ऐसा नहीं है. According to the situation, according to the ball holding and the ball rotation, आप अपनी space, अपनी जगह change करते रहो. Look at the team that produced the golden results for Spain. Xavi, Iniesta, everybody, kept on rotating. That was something which was, excellent. Sergei Busquets, whatever. Even you've seen people like, I would say, Carlos Puyol and whatever, participating in the attack, and everybody going for, goal, and then, the great goal scorers. So even they introduced the concept of false nine. So that was also a bit of, the deriving of out of this concept of total football. Is say, football is a science. आप मान लो या ना मानो, आपको ये जानना है, football is emerging.
ये एक फुटबॉल एक साइंस है और इसमें इतने सारे टेक्नोलॉजिकल यूज अभी हो रहे हैं. सो एंड रिसर्चर्स आर ओपनिंग अप न्यू एवेन्यूज. आप जितने भी आप दिन जाएगा, मे बी आफ्टर दिस वर्ल्ड कप इमीडिएटली द फीफा technical committee would sit down and we receive all those bunches of technical analysis. हम Okay. मेरा मेडिसिन का आता है, फुटबॉल मेडिसिन का. ऐसे कोचेस के पास सारे ये टैक्टिक्स और tactical preparations जाते हैं. All these are dispatched to the accredited coaches of FIFA, all the national coaches. तो अभी ये, and again maybe by the next World Cup, maybe by the next Euro, और काफी सारे कुछ नए सिस्टम्स कुछ उभर के आ सकते हैं. Some new thing, some brilliant guy could bring in some concepts. So it's ever changing. ये बराबर बदलते रहते हैं. कोई ऐसा कुछ स्टैटिक नहीं है. And as rightly said by one philosopher that the only one thing is constant, that is change in the world. तो यही फुटबॉल में भी यही होता है ना. Absolutely. ये जो आपने चेंज की बात की है तो बहुत कॉमन सी चीज है और ये एक ऐसी चीज है जो होती ही रहती है. Definitely, it's inevitable, and we have to just move on whenever this thing happens. But Palab, I noticed one thing. There has been a kind of a pattern in any international team performing well successfully. Although, yeah, their club players have to play at a very competitive level. ये बात तो चलो established हो चुकी है. But I think that 2006 में when Italy won, I noticed Cannavaro, even Pirlo. Also, we talk about Alberto Gilardino. All these players, they've all played together. They've played together. They've played club football together. A few of them. Yeah, most of them with the old lady. Yeah. Yeah. Even for Juve, I mean, it's a brilliant generation. Del Piero and everybody, So I mean, there was sort of a combination. Same thing happened right now. You talk about what only recently some people went away, but then it was Giorgio Chiellini or the Gigi Buffon and everybody. So I mean, most of the people were together. That's important. The club bonding is also important. But national team की अगर बात करो, मैं ऐसा ही कह रहा था कि जैसा आप कोई गार्डन से आप बेस्ट जो फूल खिलते हैं उसको आप चुन के देन यू मेक अ नेशनल टीम. इट्स ये बोके ऑफ द बेस्ट फ्लावर्स. Yes. तो ये कोच की काम होती है कि यू गेट. बट अगेन देयर आर आल्सो बिग इश्यूज. इसमें ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ये सारे वर्ल्ड में ही होता है. एट टाइम्स द क्लब कोचेस एंड इवन द क्लब एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने बेस्ट खिलाड़ी को कभी कभी नेशनल ड्यूटीज पे छोड़ते नहीं है. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट इशू. ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये इस बात में इंडिया में काफी चर्चा हुआ कि अभी क्या पहले, देश आगे या अपना क्लब पहले, अपनी रिस्पेक्ट अपनी सम्मान आगे या अपना पैसा आगे. बात यह है कि हर एक जो प्रोफेशनल है वो उसकी एक लिमिटेड पीरियड होती है परफॉर्म करने की. और आप जितने तक परफॉर्म कर पाओगे यू विल अर्न. हर एक फील्ड में ऐसा होता है. स्पोर्ट इज नो डिफरेंट, क्रिकेट इज नो डिफरेंट, फुटबॉल इज नो डिफरेंट. तो इसमें जो है आपको कौन देखता है होल ईयर? यू टेल मी. द क्लब. क्लब लुक्स आफ्टर यू. तो अभी ये जब नेशनल टीम में क्वेश्चन ये आता है, अभी थिंग्स हैव ऑल इम्प्रूव्ड नाउ. नेशनल फेडरेशंस आर गिविंग गुड फैसिलिटी. मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ. But at one point of time, even if you get injured playing for a national side in India, I mean, I'm very sorry to say, बोलने में मुझे खराब लग रहा है, बहुत ही देखा है in the past periods, 70s, 80s, 90s, players had to go out and do their own treatment. Federation कभी तब उस टाइम में कुछ भी हेल्प नहीं किया. 1,000, 5,000, 10,000 रुपया कुछ भी नहीं दिया. And you undergo big surgery and whatever. तो उसमें खिलाड़ी को क्या होगा? जो थोड़ा सा भी आगे आता है वो अपना क्लब. सेम हैपेंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. आई थिंक आप कह रहे हो आप देखो एक चीज, लियो मेसी कैसे लियो मेसी बना? Could he have become Messi had he stayed back in Rosario's small area? Could Argentina build up Leo Messi? I pose this question and इसके बारे में काफी हम चर्चा किए different places में हम जब सेमिनार करते हैं तो I asked him. It was the doubts of the La Masia from the football club of Barcelona who went and touted him and got him there. And he was such a small guy.
he was not growing. So that is a very famous story कि उसको growth hormone दिया गया, बड़ा किया, उसको पाला पोसा, 7, 8, 9 different type of meats he used to consume to get that muscle bulk. He doesn't have a muscle bulk like even CR7, okay? Yeah. But again, whatever is necessary for his skill has been built up by this at the La Masia. So again, club plays such an important role. And again, then finally when you flourish, when you up जब एकदम उभरते हैं, आपको फॉर्म की एकदम टॉप फॉर्म में जाते हो, तब you go out and perform for the country, or you bring laurels. And again, for club you win trophies. It's very important. You get hike in your contact money and whatever. लेकिन देश के लिए क्या होता है? You win a World Cup, you win a Euro, you win a Copa America, you win a African Cup of Nations, or you win a Asian Cup. उसमें आपको सम्मान बढ़ती है. कोई खिलाड़ी ऐसे डीप डाउन देयर हार्ट वो फील करते हैं कि भैया सिर्फ रिस्पेक्ट, सिर्फ इससे क्या होगा. आज की जो दिन है, आप अगर बात करो, इट डजंट काउंट दैट मच. इज अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट. ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है जो जिसके बारे में काफी चर्चा भी होना चाहिए हमारे स्पोर्ट्स पॉलिसीज में, हमारी कंट्री में. डेफिनेटली पल्लव दा होना चाहिए. मैं आपको इसी बात पे आपके हित में ये बात बताना चाहता हूँ कि इवन इन क्रिकेट this has been happening. If you follow the West Indian team, if you follow the South African team, Kolpak deal वो लोग साइन करके सारे इंग्लैंड चले जाते हैं. Kyle Abbott, there was Riley Russo जो अभी वर्ल्ड कप खेले साउथ अफ्रीका से, but he had signed the deal. So what I'm trying to say is कि because there is so much pay gap, the entire West Indian team revolted against their federation. अब वो कुछ ऐसा रूल्स ला रहे हैं कि आपको फलाना इतना मैच आपको खेलना होगा. दिस you can't skip tournaments according to your will. But again, they are moving out for money and they've got the talent. They know that this is going to stay for maybe I make money for what, 5 साल 10 साल, that's it. उसके बाद में कौन जानेगा? Nobody, not everybody is a Sir Viv Richards or a Clive Lloyd or a Gordon Greenidge or a Ian Holding or whatever. I mean, Ian Bishop or whatever. Bishop. Michael Holding. So, I mean, not everybody is great. So that is the reason that Kieran Pollard and, Darren Sammy and Dwayne Bravo and Sunil Narayan and all these tribes, वो बाहर आते हैं, आना पड़ेगा. That's important. Right. And they have got every right. उन्होंने सारी दुनिया की सारी फ्रेंचाइजी लीग्स में उनकी काफी, डिमांड है और वो जाते हैं. और हर एक जगह, बांग्लादेश में गया था कमेंट्री करने के लिए, देखा सारे वेस्ट इंडियन खिलाड़ी हैं. आप दुबई जाओ तो उसमें भी आपको है. पाकिस्तान लीग में वो खेलते हैं. तो दुनिया के हर एक लीग में, आईपीएल तो एकदम सबसे बढ़िया लीग है हमारे होल वर्ल्ड में. तो ये सारे सब आते हैं. द सेम थिंग हैपेंस, आप अगर यू गो डाउन केरला or some of the coastal areas, Goa, the local tournaments, a lot of Nigerians come in. Yeah. खेलते हैं. They play the matches on the basis of money. एक दिन का पेमेंट होता है उसका, खेलते हैं. यहाँ से गोवा जाता है, फिर लौट के केरला आता है. And they are the biggest supplier, I would say. The Nigeria. So many Nigerians have played. I mean, there have been some greats like Chima Okere, but not everybody is a Chima Okere who had a long stint with different clubs. तो ये लोग पैसा बनाते हैं. And why not? मेरा कहने का मतलब है, आपको जितना टाइम तक I would say जान है जहान है, तो आप पैसा भी बना सकते हो. And you have got every right to do it. Yes, sir. Absolutely. And the thing is that the people come from very different backgrounds. सबकी inspiration और motivation और drive अलग होती है towards playing a sport. Some people play just for the passion of the sport, where they don't consider money or they don't consider fame and all of this. वो सिर्फ खेलना चाहते हैं, ग्राउंड पे रहना चाहते हैं, बॉल को किक करना, ये मेरा पैशन है. But then there are people who have seen hardships, who have seen their parents working in someone else's house. And I've heard so many stories. नेमार की स्टोरी मैंने सुनी, मैंने गैब्रियल हेसुस की स्टोरी सुनी है, मैंने मेसी की भी स्टोरी सुनी है कि और रोनाल्डो की कितने गरीबी से ही आ चुके हैं. तो once they taste success, I think when they see that things have happened, तो फिर they believe that it's not a bad call to earn some money as well, right? Yes, why not? I mean, it is not a crime to earn money. अगर आपकी स्किल की एक्सचेंज में आपको मनी मिले तो इट्स वेलकम. बट वन थिंग, द मैच यहाँ पे जो चल रहा है,
at the Al Thumama Stadium. अभी ग्रुप ए की काफी इंपॉर्टेंट मैच है ये. इसमें फिफ्थ क्वार्टर भी चल रहा है और अभी भी गोललेस है. यानी कि आप देखो सेनेगल टीम ये एकदम बिल्कुल दे हैव पुट द डच साइड इनटू लिटिल ट्रबल. और वो लड़ रहे हैं बॉल बाय बॉल एंड एट टाइम्स कभी कभी वो अटैक में भी जा रहे हैं. राइट राइट, क्योंकि आई थिंक सेनेगल का बेस्ट बात ये है कि उनका जो शेप है इट इज वेरी कॉम्पैक्ट. आप उनके 4-5-1 जो आपने मेंशन किया था, जो 4-5-1 में सेनेगल आर प्रेफरिंग टू प्ले, उसमें जो मेंडी है जो उनके डीएमएफ है, डिफेंसिव मिडफील्डर है, उनका पोजीशन एकदम पिवटल हो जाता है जैसे ही नेदरलैंड्स अटैक कर रही है, बिकॉज नेदरलैंड्स आर प्लेइंग अ हाई प्रेसिंग गेम एज दे आर प्लेइंग विद 5 मिडफील्डर्स. मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेनेगल टू नॉट लूज देयर कूल. मैं फर्स्ट हाफ देख रहा था तो आई थिंक नेदरलैंड्स से ज्यादा पासेस कंप्लीशन सेनेगल के थे एक पॉइंट पे. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट सेनेगल के जो मिडफील्ड प्लेयर्स है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन कॉम्पैक्ट एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज क्राउड कहा जाता है अभी मॉडर्न फुटबॉल में जो है. और आप सुने भी होंगे ब्रॉडकास्टिंग में काफी हम यूज भी करते हैं कि हाउ यू मेंटेन योर शेप, द शेप इन द डिफेंस, द शेप इन द मिडफील्ड एंड हाउ यू थ्रो योर मेन इनटू द अटैक, यू नो द पीपल हु आर लीडिंग द लाइन. तो ये तीनों चीजों के ऊपर भरोसा करके एक टीम की प्रदर्शन जो है ये होता है. एंड अगेन for Senegal, you know, they basically gone for a as you mentioned that in front of Koulibaly and Cisse, they have Mendy as you mentioned and Koyate, and then again important is Goyaye just in front of them, you know. Yes. Basically he has a dual role, sort of at times a role of a number 10, you know, creating passes, at times falling back. And just remember the African players, we have tested this across FIFA everywhere, that the maximum amount of work rate जो होती है, जो परिश्रम करने की, जो वर्कलोड उठाने की जो क्षमता होती है, सबसे ज्यादा अफ्रीकन खिलाड़ियों की होती है. Just think of it, who are the long distance runners, who are the middle long distance runners, most from the African nations, because their muscle is built up in such a way कि वो हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस, यानी कि ऑक्सीजन की चलाचल होती है, ऑक्सीजन जाता है आता है, बट द मसल कीप्स ऑन वर्किंग. A sprint is always an anaerobic thing, like पीटी उषा के sprint muscles जो है फाइबर्स, वो सबसे बेहतर था, इट्स कॉल्ड व्हाइट फाइबर. और बाकी जितने को है जो वर्क रोड जो बहुत लेते हैं, जो बहुत दौड़ सकते हैं, बहुत लंबा टाइम तक दौड़ सकते हैं, उनकी मसल फाइबर्स रेड होती है, उनकी ज्यादा तक रेड फाइबर्स होती है. सो ऑल दीज पीपल हु हैव गॉट मोर यू नो परफॉर्मिंग एबिलिटी, अफ्रीकन्स की ये रेड फाइबर्स ज्यादा होती है. दैट्स द रीजन यू सी most of the English Premier League clubs and also the best clubs, they have taken defenders and the working defending midfielders, the central defenders, the box to box midfielders, सारे वो अफ्रीकन कंट्रीज का ही प्रेफर करते हैं. सो देयर इज साइंस इन एवरीथिंग, जो मैंने कह रहा था. थोड़ा ग्रुप ए का फिक्चर भी बता दीजिए सबको. तो अभी सेनेगल और नेदरलैंड्स की मैच चालू है. अगर ये गेम ड्रॉ हो जाती है मतलब दा, तो पूरे ग्रुप पे ये बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर देगी एक तरह से, क्योंकि इक्वाडोर ने जब 2-0 विक्ट्री कर ली कतार से, तो सेनेगल के लिए आई थिंक ये रिजल्ट बहुत अच्छा होगा. इट्स अ 0-0 ड्रॉ, दे कैन गो अहेड विद कतार एंड इक्वाडोर, एंड आई बिलीव दैट सेनेगल जिस तरह वो खेल रहे हैं आज अगेंस्ट नेदरलैंड्स, दे कैन गेट अ विन हियर, दे कैन गेट अ विन अगेंस्ट कतार एंड इक्वाडोर, और वो तो थ्रू हो जाएंगे डेफिनेटली. Yes, the top two teams have to qualify, and again once again all those सारे जो डच फैंस हैं और समर्थक है और जो चाहते हैं कि भाई ये तरह फ्लरिश करे, ये बिग स्टेजेस में नहीं आते हैं, नॉट इन द लास्ट वर्ल्ड कप, और फाइनल स्टेजेस पहुंचते नहीं है, तो दे मे अगेन बी थोड़ा सा डिसर्टेड, थोड़ा सा निराश होंगे शायद. तो आई मीन दे हैव टू परफॉर्म. एंड अगेन as you rightly mentioned, I mean, Anubhav was telling me that the striking force is absolutely missing. क्योंकि देखो अभी इनके आपके पास you know, you don't have a Memphis Depay, you know, who can, you know, get you some goals. And again, Memphis Depay is not a Ruth van Nistelrooy. I mean, he can't score like that. Yeah.
So that's very important. तो आपको गोल स्कोरिंग भी तो चाहिए. That's also important. आप मतलब देखिए पिछले जितने भी साल में आपने मेंशन किया गोल्डन जनरेशन, दे हैड रनर्स, दे हैड गोल स्कोरर्स. इस टीम में वो मिसिंग है. दिस टीम आपने आई थिंक कहा भी था बिफोर दिस सेगमेंट व्हेन आई वाज ऑफ कि वो लोग विंग बैक्स का बहुत यूज करते हैं, एंड दैट इज द ओनली वन डायमेंशनल प्ले दैट दे हैव. देयर इज नो अदर थ्रेट दैट दे पोजेस. अब जैसे आप देखिए 2014 में उन्होंने जब अच्छा किया तो रॉबिन वैन पर्सी वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो आर्यन रॉबिन तो था ही इन्वर्टेड विंगर, हमें तो पता है वो कितना लीथल और थ्रेटनिंग थे, बट रॉबिन वैन पर्सी वाज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके पहले आपने मेंशन किया रूड वैन निस्टेलरॉय. तो ये जो प्लेयर्स है आपके पास जब अटैकर्स नहीं होंगे, यू नो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में मेम्फिस डिपाई हैज स्कोर्ड अराउंड 12 गोल्स, बट कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप इट इज अ लिटिल इंजरी प्रॉब्लम. मैंने पिछले मैच में भी जब था तो वी वर डिस्कसिंग that ये वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच विल बी रिडन विद इंजरी. इतने सारे चोट खिलाड़ियों को अगर हो जाए तो आप कैसे द बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे होगा? पीपल कांट डू दैट. वो बराबर झिझक जाएंगे, बराबर वो दे विल बी इन बिट ऑफ ट्रबल. और एक सोच ये भी चलते रहेगा कि अगर चोट हो जाए मेरा तो बाकी सीजन क्या होगा? क्लब मेरा सर्विस नहीं मिलेगा, नेक्स्ट सीजन हमको साइनिंग कहाँ होगा? So never ever November December can be a good season for the World Cup. आप देख लो पिछले जितने भी हिस्ट्री है हम देख चुके हैं. World Cups and Euros have always been good in the June and July window. So this is a lesson for FIFA. Of course they will possibly make a course correction. शायद. But again money speaks. Money definitely. You actually put me on a spot here. आपने ऐसा बोल दिया. आपकी बात तो एकदम I agree because जो जून और जुलाई के टूर्नामेंट्स होते हैं, मई में जो आपका प्रीमियर लीग, बुंडेसलीगा, चैंपियनशिप जो भी है वो खत्म होता है, तो यू गेट अ 15-day विंडो टू रिकवर, टू गेट इनटू द ग्रूव ऑफ द वर्ल्ड कप. यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड कप के 1.5 हफ्ता पहले केविन डे ब्रुयना हैज बीन प्लेइंग चैंपियंस लीग, ही हैज बीन प्लेइंग प्रीमियर लीग. 7 days में नहीं मिला. Some players have just arrived 2 or 3 days before. अब सोचो नेमार कब पहुंचा? 4 दिन पहले पहुंचा. When did Messi reach? 5 days. First 2 days total rest. उन्होंने सो गया, प्रैक्टिस भी नहीं आया था. Yes, Ronaldo was working. I say in that way of the 3 superstars, superstars, super duper stars, or mega stars, whichever way you love to call it up. कुछ भी कहो उनको. You call a rose by any name. Messi, Neymar, GOAT of course, and Ronaldo. Yeah. Cristiano Ronaldo is in a better position. Maybe that little fight and little disargument and disarrangement at the Manchester United is going to help the cause of Portugal. Unko khilaya nahi gaya. He came from the benches, was underutilized. That's what he says. Yeah. He's fresh and raring to go. He has to prove something to his coach and the old club from where he finally made his grade. तो उनको काफी सारे people को आंसर करने का है. the character trait जो है रोनाल्डो को, जो मैं जानता हूं, जितना तक मैं स्टडी किया हूं, he is a guy who would not take anything lying flat down. वो अपना स्टेटमेंट रखेगा, then he will say goodbye. So just mark my words. मैं जो आज कह दिया आप मार्क करके रखो. This is what going to happen. So maybe could be a repeat of Euro 2016, and Ronaldo, as I told you, is more fresh than Neymar, or his greatest enemy or friend, whatever you call it, which way you call it, Leo Messi. Yeah, but the thing about Ronaldo is also the fact that he has been underutilized. आपने तो ये mention किया ही. उसकी टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. Portugal is in good form. He is in good mental health in that sense that उनको redemption करना है. वो जितना भी स्ट्रगल कर चुके थे अभी इतने टाइम तक यूनाइटेड के लिए, वाज नॉट गेटिंग गेम टाइम, प्रूविंग हिज क्रिटिक्स रॉन्ग, ये सब तो कहने की बात है, बट एक खुद कहीं ना कहीं एक आपके अंदर वो होता है, ये है रिडेम्पशन करने का आपका ये मौका मिला है आपको इन द वर्ल्ड कप. यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर योर क्लब, यू आर द ग्रेटेस्ट प्लेयर, यू मेंशनड ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एंड ही इज बीन पुट ऑन द बेंच. व्हाटएवर रीजन इट मे बी, टैक्टिकली नहीं बैठ रहे हो, आपका टीम का केमिस्ट्री नहीं है, व्हाटएवर पर्सनल इशू, आपका वेंडेटा होगा शायद, हमें क्या पता. बट जो रोनाल्डो नहीं खेल रहा है, आज उसे ये मौका मिला है. आपने कहा वो सबसे फ्रेश है, एंड आई थिंक ही इज इन बेटर शेप. वो बाकी दोनों से थोड़ा बढ़ के है.
थोड़ा फ्रेश है। आप देखते हैं सारे जो सुपरमार्केट जाते हैं ना, आप कहाँ दिल्ली रहते हो, आप कहीं भी चले जाओ, वेयर डू यू स्टे? इन दिल्ली, मुंबई, ओके, सो यू गो टू एनी ऑफ द सुपरमार्केट्स, मुंबई के जहां भी जाओ आप, जाके देखो देयर इज अ शेल्फ लाइफ लिखा है, इसके पहले आप यूज करो, एंड दिस हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन दिस डे, दिस हैज बीन इंपोर्टेड इंडिया। इंडिया में अभी ये आ गया कि कभी ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ, तो यू नो हाउ फ्रेश इट इज। ये सब्जी जो हम खरीदेंगे तो कितना फ्रेश है, कब ये प्रोड्यूस हुआ है, कब वो बॉटल्ड हुआ है, कब वो पैकिंग हुआ है। राइट, रोनाल्डो इज इन अ बेटर पैक्ड शेप, उसका शेल्फ लाइफ अभी इस टूर्नामेंट में मेसी और नेमार से थोड़ा आगे है। सो दैट क्वोशंट इज देयर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट बनेगा पूरा टूर्नामेंट में। हम हिंदी में कहते हैं ना कि जो जख्मी शेर होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। 2 स्टेप पीछे लिए उसने, इसका ये मतलब नहीं कि वो भाग रहा है, वो छलांग मारने के लिए ले रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ very good statement that you made, Pallab. The very good observation you made about Ronaldo. This didn't come to my mind actually, and I think most of the viewers who are watching right now also must be wondering, हाँ यार ये बात तो सही बोली. So this is what 46 years of experience brings. And Pallab, what do you think out of Argentina and Brazil, who has a better chance? If you look at both the squads, you've seen both the squads, you've seen the setup between the two teams. Messi winning the Copa America, performing well individually. Do you think he has an edge over Neymar? I think this is now time for Messi to return the compliment. Okay. To कोपा ने उन्होंने नेमार को हराया, और उसके बाद में जाके अपना बेस्ट फ्रेंड को, you know, he was in tears, वो रो रहा था, मैं कमेंट्री कर रहा था, even we became emotional, इतना वो नेमार रो रहा था और मेसी जाके उसको हग किया, इतना कूल डाउन किया, whatever. Could be this time, अगर there is a final, if again a big if, then could be Brazil in better shape if Neymar is perfect, is not okay, not doing too much of drama, not taking important yellow cards, and not piling up cards and missing important matches. ये भी नेमार का एक प्रॉब्लम है, जैसा हम आर्यन रॉबिन के बारे में बोल रहे थे, you know, the play acting and most amount of yellow cards and vital position उन्होंने मैच मिस किया था. So even that happens to Neymar as well. 2018 में काफी हमने सारा वर्ल्ड में चर्चा हुआ इतना कि, you know, he could be a better actor, could be winning a Oscar for his diving and whatever attempts. तो ये बात है, अगर वो संभल के रखे, Brazil is a better side because you just take out Neymar. Look at the other guys. Richarlison, you see Vinicius Jr., what great form they are in. Martinelli, Gabriel Jesus. Absolutely, just I'm just naming one or two. There are 5-6 of them who can change the course of the game. उसको बदल सकते हैं. For Leo Messi's side, this is basically a defense-oriented side which Scaloni has picked up. And again, Uncle Maria is aging because most of the time, you know, the attacks are from the right. Maybe Messi setting up one, maybe Uncle Maria setting up one, and Messi converting. And they would be missing some important players in the midfield. So that is also very important. I would say Argentina not in full strength. I think Pallab, they are missing that striker. You know, we used to talk about they had Hernan Crespo at one time. Yeah. They're missing, now they're going to miss Sergio Aguero. Yeah. Or Kun Aguero. They would be missing him. Like France missing out Karim Benzema. Whoever it is, you know, even Kylian Mbappe going for goals and whatever, great touch and things. Poacher's goal, always it come from Karim Benzema. And just look at the Champions League and all the other tournaments. Look at how he performed, at what level, at the club level. Always did get the importance goal. उन्होंने जब वो चाहा, you मांगा आपने, मैंने deliver किया. So that's it. Absolutely. So he is going to be a very vital player, and that is what is going to, you know, be a, you know, उसको नींद नहीं आएगी Didier Deschamps को, because he is missing Benzema. He is one who put, you know, Benzema out for a longer period, and then he had to call him back for the Euros, and he proved it. That's it. I think that's how you silence your critics. कहीं ना कहीं यही होता है कि and आपने जैसा कहा जख्मी शेर वाला आपने जो example दिया आपने, and absolutely Ronaldo is one who will just not take anything lying down. He would just answer. Koyate has been stretchered off here because he's been fouled. Yeah, that is something very, I should say, shouldn't have happened. Upsetting. Unfortunately,
I love that you brought to light the fact that Benzema, the likes of Aguero, these people will be missed. I sometimes have a reverse psychology kind of a thing. I'm agreeing to your point. I'm just shedding a little more light and a different perspective to it. Sometimes rather than your goals, your presence matters. Because in the 2018 World Cup, when France won the World Cup, Olivier Giroud started in every game and he failed to score a single goal. His presence was such that the defenders were attracted to him. He lured the players towards him, which gave Antoine Griezmann and players like Mbappe so much space to make an impact. That doesn't make that. That doesn't say the stats say that Giroud might have not scored a goal, but his presence has helped France get the cup. That is what यही कहा जाता है कि football, playing without the ball. Without the ball play is important. Your positioning is important. आप कहाँ पे आपको position करते हो. कभी-कभी आप ऐसा होता है कि you get down into the hole. आप central defenders दोनों को engage कर लो. Then you open up the channel for Kylian Mbappe, maybe Antoine Griezmann from the right, could be Mbappe from the left or Griezmann from the middle, or even swiping things. So that opens up a lot of things. ये होता है. So again, a presence of Oliver Giroud or a presence of Karim Benzema, a presence of Ronaldo Senior in the opposition box is always a threat. Defenders जो है, goalkeepers जो है, बाकी सारे जो है, वो उसको back of mind में ये चलते रहता है कि भैया ये है और ये एकदम poacher है, fox in the box. Even a Harry Kane is a big threat inside the the 6-yard area, maybe the total 18-yard area. So आप कभी-कभी उसको कभी छोड़ेंगे नहीं. You would always make a tight marking. You can't leave Wayne Rooney free in the area, and because they can score goals. That's very important. You couldn't have left Ruth van Nistelrooy free. He could have scored goal from any position. So those are the important things which सब हर एक वक्त आपको ये चलते रहता है. You can't leave a David Villa. David Villa. Not many people talk about him. They talk about Iniesta, they talk about Xavi, they talk about the others. But again, he was the top goal scorer. आपको याद होगा जब वो World Cup भी जीते और Euro भी जीते हैं तो he scored so many goals and a great goal scorer. Not a tall person, little stocky build, but what a great scorer they could be. तो उनको कभी छोड़ते नहीं है. ये is sort of a pressure game, a mind game on the opposition defenders. Right. Even in his Valencia days also, जब वो वहाँ पे I think he was captain back then. कल तो कमाल कर दिया. Absolutely, he's great. He could have got a hat trick as well. कल तो hat trick भी होने का था. Okay. So now speaking of Ronaldo, you took Ronaldo Senior's name. Now I have not been that fortunate to watch him play live. Not in person. आप पुराना वीडियोस जो है सर्च करो तो आपको मिल जाएगा. I've just seen a compilation of his best moves. I couldn't see a whole 90 minutes of his game. So you must have seen him up close and personal. So is it fair to say that he is the greatest striker or forward who has played this game or graced us? Not really. I mean, you have to think of some other big names and the all-time great Pele, of course. And then at that point of time, you had even, why not? I mean, besides Maradona and before Maradona, you had Batistuta scoring so many goals. It was called Batty goal. I mean, at one point of time, he could score goals from anywhere, and really it helped. So I mean, and there had been yes, of course, he could be in the top I should say the top 5 or top 10 scorers. Even Bebeto scored a lot of goals. Even Romario came as a help to score goals. So I mean, at that point of time, Brazil का जो होता है ना, you never have a sort of a dearth of talent. आपको एक जाता है तो it's sort of like a Sholay dialogue. आप मेरा एक मारोगे तो मैं आपको 2 मारूंगा. तो that's like that. So आप मेरा एक खिलाड़ी ले लोगे, one will be off form तो मैं आप 5 भेज दूंगा. So it's almost like that. So I always tell that Brazil is a Sholay story. वो गब्बर और गांव वालों की जो अनएंडिंग फाइट था और Sanjeev Kumar साहब की, तो this went on and Brazil is that like that unending supply. There is an update, sir. There has been a goal by Netherlands. They have taken the lead against Senegal
against the run of play, against what we were predicting or what we were thinking, what would go right for Senegal, and we see a goal here. I have the goal scorer here. It's Gakpo, their midfielder, who has scored a goal. So Netherlands have taken the lead. Pallavda, does that seal the game for Netherlands now? Yeah, Gakpo at 84th minute is again this soaks away all the blood out of the Senegal side. The fight they fought. Heartbreaking. Yeah, it's absolutely heartbroken. I thought Mendy could have done little better. He went for that, but Gakpo could get the touch before, and Gakpo could convert that well. So again, really, it's not a sort of a great build-up goal or a lot of दिखने में काफी बेहतर लगता है, ऐसा नहीं है. But a goal is a goal, and a goal in the World Cup and 3 full points are most important. So again, right now it's advantage Netherlands, but you never know. अभी भी कुछ वक्त बाकी है, so could be picture बाकी है, something would happen. Yes, picture बाकी है मेरे दोस्त. So let's watch the last 5 minutes. I think अभी बचे 5-6 मिनट इस गेम में बचे हैं. पर ये आज एक्स्ट्रा टाइम का बहुत चर्चा हो रही थी. मैं पिछली गेम देख रहा था. I think 24 minutes of extra time overall. Yeah, I mean, हमको याद नहीं है कि अभी ऐसा कभी वर्ल्ड कप में हुआ. आज नया रिकॉर्ड शायद कायम हुआ. Could be. We have to check the record. I'm not very sure. लेकिन 14 minutes पहला half और 10 minute next half, 24 minutes. ये पागलपन है. It never happened. I mean, मेरा याद नहीं है. हम ऐसा कभी देखा नहीं. ये हम टर्फ पे खेलने आते हैं ना पल्लव दा, यहाँ पे लोकली टर्फ पे खेलने आते हैं. हम बोलते हैं भैया 10 मिनट और दे दो भैया प्लीज. हाँ नहीं, वो ऐसा होता है ना. ये शायद आपको भी साथ भी हुए होंगे. इफ यू हैव योर ओन बॉल ना, अगर बॉल आपको हो और अगर आप गोल ना कर चुके हो, तो जितना वक्त अब आप गोल नहीं करोगे तो गेम एंड नहीं होगा. हाँ, और आपको अगर क्रिकेट में बैट अपना हो और बॉल भी अपन ने दिए हो, तो उसमें क्या है, आप 2, 4, 5, 6 बड़े शॉट्स ना लगाओगे तो बोलेंगे कि भाई ओवर ही खत्म नहीं हो. तो ऐसा ही कुछ होता है. दिस इज लाइक दैट. बट अगेन देयर वाज इंजरी, थोड़ा सा उसलिए रुकावट हुआ था गेम में. या नहीं, इसमें क्रिकेट में तो कैसा है, जिस मोमेंट आप आउट हुए आप बैट लेके चल गए घर पे. आपने बोला हाँ बिल्कुल, आप मुझे आउट कर डालो तो मैं बैट लेके चले जाऊंगा. मम्मी बुला रही है. ये हम भी करते थे. तो भाई आ जाओ, ठीक है चलो, फिर दोबारा आपको आउट करना पड़ेगा. सो दिस ऑल फनी थिंग्स, But again, this is a World Cup, not fun, and one could always salute the Senegal's fight. इतना वक्त तक उन्होंने powerful Dutch side को थोड़ा hold करके रखा. So and अभी भी वक्त है, they could fight back. They could possibly, but ये गेम भी अगर let's say Senegal हार जाती है, फिर भी they have a chance given the experience that they have and the quality of football they played. वो unfortunate थे कि उनका पहला ही मैच Netherlands के साथ था. But if they play Qatar and if they play Ecuador the way they played against Netherlands, the domination that they showed in the first half they can get those 2 results, and second place is always open when it comes to qualifying from their group, right? हाँ, थोड़ा सा तो है ही chance, always that's there. And जैसा है, I think जैसा club levels में होता है ना, तो you have to get that little A game out of Van Dijk. Those the crosses and meeting them, and ये आप शायद जब बात कर रहे थे अनुभव के साथ, मैंने सुना आपको डिस्कशन की, थोड़ा सा फॉर्म सैगिंग हो रहा है कि वैन डाइक जिस फॉर्म में 2 साल पहले परफॉर्म कर रहे थे, अब वैसा नहीं हो रहा है. थोड़ा he has gone through little injury cycles. उनका इंजरी से रिकवरी हुआ, बीच में बैठना पड़ा, then he had to stay out, फिर लौट के आया. then it has harmed उनकी जो रिदम जो था गेम का, जो नॉर्मल जिस ताल तरीके से वो खेलते हैं ना, वो हुआ नहीं. लुक एट द टोटल नंबर ऑफ शॉट. सेनेगल ने 13 शॉट डाला है, नेदरलैंड्स ने 8 शॉट डाला. सो आई मीन दैट आल्सो शोज द सुप्रीमेसी. उनकी बड़ापन इसमें था, लेकिन दे हैवंट स्कोर्ड. कन्वर्शन जरूरी है फुटबॉल में. I think it was against the run of play. Pura game Senegal was trying to push hard. They were going and putting those attacks. I was discussing with Anubhav, because of this 3-5-2 formation that Netherlands prefer to play, there are a lot of holes in the wider areas of the midfield when it comes to the defensive third of Netherlands. तो फिर वो एक चीज है जो exploit की जा सकती है. यहाँ पर एक quick fact आते हुए हमारे लिए,
Cody Gakpo's last 4 appearances, he scored a goal against Wales, goal against Poland, assist against Belgium, and a goal against Senegal. Wow. So I think he's just having this thing that everything he touches turns to gold. So a great stat to have here. But to all our fans out there, whoever is watching, please like our video. Please subscribe to the channel Digital2 Sports. We have Pallabda, we have Anubhav, and I today will be talking about nothing but football because our show's name is Football Bowl. Now, Pallabda, speaking of football bowl की हम अगर बात करें तो फुटबॉल ऐसा स्पोर्ट है जो आप कहीं भी खेल सकते हैं. मैं एक बार गया था मनाली, और मनाली में भी मैं ऊपर ट्रैक करने गया था. काफी बर्फ पड़ रही थी जिस टाइम पे, एंड वहां भी मैंने देखा लड़कों ने 2 स्टिक्स लगाई है. और स्टिक्स मतलब ऐसी स्टिक की मतलब उससे डॉग्स भी ना डरे, इतनी पतली स्टिक है वो. उससे उन्होंने गोल बनाकर एक फुटबॉल उनके पास था, पंक्चर्ड सा बेचारा फुटबॉल, और वहां पर लोग फुटबॉल खेल रहे थे. तो मतलब फुटबॉल के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए. Yeah, it's a universal game that you say, and थोड़ा सा अगर एक्सपेंसेस की बात करो तो थोड़ा इतना एक्सपेंसिव नहीं है जैसा क्रिकेट है, जैसा टेनिस है. हाँ, अभी भी फुटबॉल में भी काफी गियर्स आ गए. Even a boot of Cristiano Ronaldo costs you some crore. So I mean, those are different things. But the basic equipment, it doesn't cost you much. तो इसीलिए अफोर्डेबल जब भी होता है ना, जो गेम अफोर्डेबल होगा वो गेम इंपॉर्टेंट होगा. अभी हॉकी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. एंड Gakpo has scored or assisted in 33 goals in all the competitions this season. So ये बहुत productive है. और देखो, he plays 2 roles. Sort of अभी वो होल के पीछे में खेल रहे हैं, सेकंड स्ट्राइकर, या कभी-कभी वो नंबर 10 के रोल में खेल रहे हैं कि he sort of creates passes, and which could be more for had Memphis Depay been operating. So उसमें और conversion की chances ज्यादा होते थे. But again, the role that he plays in, and the role जो आपको लुई फान हाल ने दिए हैं, अपना बहुत ही अच्छा से वो निभा रहे हैं, वो जो उसकी जिम्मेवारी उनकी दी गई. Yes, absolutely. ये गैप्पो की हम बात कर रहे थे. So many goals he has scored. It's his 11th match. I'm getting a stat here. It's his 11th match for Netherlands. So he's quite a raw player. 33 goals already scored this season's last 4 games. He's got 3 goals and 1 assist, and he's just 23 years old. So I think we have a bright prospect in front of us. He could probably pass on as the young player of the tournament if he's under 23. So that is something to watch out for. But young players की बात करते हुए, पल्लव भाई, आपको क्या लगता है, who is the young player to watch out for? आपने काफी प्लेयर्स इसमें देखे रहेंगे, काफी ऐसे नए नाम भी है जिनकी हमने बात नहीं की है. जैसे एक्वेडोर में एक डिफेंडर है, पियरो हिनकैपे करके. He is, I think, 19 or 20 years old. He plays for Bayer Leverkusen in the Bundesliga, and he's a regular starter for them. And yesterday also he played, kept a clean sheet, and was phenomenal. तो ये ऐसे जो प्लेयर्स हैं जिनके हमने नाम नहीं सुने हैं, I think it is time that we start knowing their names as well, कि हमें पता चले कि भाई ये भी एक खिलाड़ी है, ऊंचे दर्जे का खिलाड़ी है. तो आपको क्या लगता है, in this World Cup, who are the potential players for the best young player? We have to still wait. थोड़ा सा अभी भी इंतजार करना पड़ेगा. You have to see each team playing once. Again, young players को कई कोचेस होते हैं जो इतने बड़े मंच पे शुरुआत में जगह नहीं देती है. आपको याद होगा शायद जब मेसी पहला बार गया था खेलने के लिए, he was not given chance in the first World Cup. सारे टूर्नामेंट बेंच में बैठ के रहे. Then again it was Maradona who was given the charge of the national team. तब उन्होंने मेसी को ले आया, and then he could know and he could guess that ये है a player of greatest time of different caliber. ये डिपेंड करता है कि कौन कोच कैसे वो chances देते हैं. But again, after at least a little mid portion, maybe early second week, we can tell, because expectation काफी के बारे में रहते हैं. लेकिन you have to perform, and this is like a cricket World Cup. जैसा जिस मंच पे आप जाके परफॉर्म करना डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत ही दबाव रहता है मेंटली, साइकोलॉजिकली, एंड फुटबॉल इज ऑलवेज अ फिजिकली चैलेंजिंग गेम. और भी ये बढ़ गया क्योंकि टूर्नामेंट कतार में हो रहा है. आपको दिन का टेम्परेचर अभी भी 34, 35, 36, 38 रहा है. मान रहे हैं कि आप होटल में आप जो है
तो आप एयर कंडीशन में रहते हो, स्टेडियम में ऐसा इंतजाम किया गया बट इट्स नॉट वर्किंग। मैंने बात किया जो गए हैं वहाँ खेल देखने के लिए, इतना वो फील नहीं कर रहे, वो भी उसको पसीना पसीना हो रहा है। इसलिए बियर का ज्यादा यू नो देयर हैज बीन लॉट ऑफ डिमांड फॉर दैट द ड्रिंक्स, यू नो। But और I यूरोपियंस तो ये मांगते ही है। एंड yeah, अगेन whenever they're going out for training, तो उसमें तो काफी ज्यादा they have to have face that heat। तो ऐसा हुआ कि इंग्लिश टीम एक दिन प्रैक्टिस भी नहीं किया, लौट के आया। सो all these things are happening, so we have to check on the whole thing कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, and how the things are happening, how they're getting chance, so that is going to be important। इसके बीच में एक ट्रिविया आया है हमारा टीम Digital2 Sports से, जो Kovdi has been awarded as a player of the young player of Dutch side के for 2022। so important। अभी इनके गोलकीपर की भी, मंडी को भी एक अवार्ड मिला, लेकिन गोल जो हुआ है शायद वो लेफ्ट फ्लैंक से एक इनोक्वस फ्लोटेड बॉल था जिसमें वो हेड लगाया गैक्पो ने, बट अगेन इट वाज a good conversion, I would say, that Cody Gakpo is becoming very important, a vital cog in Louis van Gaal's wheel। तो इसको देखना होगा कि ये कैसे आगे बढ़े। Yes, you're talking about the young players, you have to keep an eye on Jude Bellingham as well। अच्छा है, yes, young player है, you haven't heard much about him। जैसे अभी फिल फॉर्डन की चर्चा होती है, जैक ग्रिलिश की चर्चा होती है, मेसन माउंट की हम काफी बात कर चुके हैं। सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन हिम एज वेल। अच्छा गोल डाला उन्होंने आज। अच्छा प्लेयर है वो Jude Bellingham। He is the only player again to play for England but not play for the Premier League, play for the Bundesliga। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बड़ा स्टैट है ये। तो अब ये इसके बारे में हम अगर बात करेंगे अबाउट सेनेगल, मेरा ऐसा मानना है कि जो छोटी टीम्स होती है, नथिंग अगेंस्ट सेनेगल, बट जो छोटी टीम्स होती है, इक्वेडोर, सेनेगल, कतार तो फर्स्ट टाइम खेल रही है खैर, बट जो ऐसी टीम्स है, ईरान, जो वर्ल्ड कप में काफी रह चुके हैं, बट दे हैव नॉट हैड एन इम्पैक्ट व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप। I personally have read a lot of interviews and all the pundits have made this comment and made a speculation। उनका ये कहना है कि क्योंकि नेदरलैंड्स, क्योंकि इंग्लैंड, क्योंकि पोर्चुगल, इनकी हिस्ट्री इतनी रिच रही है, ब्राजील, अर्जेंटीना, इटली, वेस्ट जर्मनी, कि they've played World Cup for so many times, they've won it so long, so whenever they play a World Cup, that automatically puts a lot of pressure on the younger teams कि हम तो कभी पहुंचे नहीं है यहाँ पे, they already are in awe of the pedestal that they have been given। So is that something that plays in the minds of the teams that have been the underdogs per se? देखो एक चीज मान लो पहले, this is such a bigger stage, not every team can win it। only what 8 countries have won the World Cup, huh? Brazil 5 बार, जर्मनी इटली 4 times each, अर्जेंटीना 2 बार, फ्रांस 2 बार, यूरुग्वे 2 बार, वो भी बहुत पुराने जमाने के बात है, इंग्लैंड only once and Spain once। Netherlands have not won it, not even Hungary at one point, they were very very strong side, Czechoslovakia, Sweden, Croatia। So I mean again at the bigger stage is very important। अब इतने winners आप देखे, इतने ज्यादा winners तो है ही नहीं, तो इसीलिए this is really something which is very very big। और आपको इस स्टेज में मेरा 2 चीज लगता है बराबर, एक है आपको थोड़ा सा चैंपियंस लक जरूरी होता है, that's number 1। people talk about that Maradona's hand of God goal and whatever, लेकिन अभी एडेड टाइम में क्या दूसरा गोल डाल दिया, एक और गोल हो गया यहाँ पे। I think Netherlands have scored another goal। yes, oh my great। God, they sealed the game। yeah, they the game, पल्लव दा गेम ओपन हो गई होगी। I think Senegal must हाँ be बिल्कुल, हाँ क्योंकि सेनेगल शायद गोल करने को कोशिश कर रहा था। that was Davy Klaassen who's got the second goal। great। तो ये अच्छा रहा लुई फैन हाल के लिए, जो बहुत अटैकिंग तो नहीं आते, वो फर्स्ट अपना डिफेंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड बिट ऑफ डिफेंसिव लैस में कहूंगा, लिटिल 1-on-1, एंड गोलकीपर ने कोशिश की मेंडी से, कुछ थोड़ा सा कलेक्शन अच्छा नहीं हुआ था, तो उसका रिबाउंड जो गया वो डेवी ने डाल दिया। सो सेकेंड गोल शुड बी रियली हार्ट ब्रेक फॉर दी सेनेगल साइड। इतना अच्छा फाइट किया और गोल डिफरेंस लास्ट में काउंट करेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। लूजिंग बाय 1 goal एंड लूजिंग बाय 2 goal
makes it a big difference. Yeah, and डेवी क्लासन हम जानते हैं वो आयैक्स के लिए बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं. He has been playing regular football in the Eredivisie, so we see him play quality football. तो ये जो प्लेयर्स की वही हम बात कर रहे थे, जो आपने कहा कि जो एक्सपीरियंस होता है, आपने बोला सिर्फ 8 टीम अभी तक वर्ल्ड कप जीती है. आपने कहा 8 टीम जीती है. नेदरलैंड्स हैव नॉट वन इट, क्रोएशिया हैव नॉट वन इट, यू नेम बेल्जियम एज वेल हैज नॉट वन इट येट. आपने बात की नहीं उसकी, बट वो आपकी फेवरेट आपने बोला था इस टाइम पे. दे कुड बिकॉज़ बी दिस वाज overdue ना. ये काफी दिन ये ड्यू हो रहा है. अभी ये हुआ नहीं. दे हैवंट बीन एबल टू कन्वर्ट दैट. तो ये मुझे थोड़ा सा मैंने पहले बार भी कहा कि ये बेइंसाफी लगता है कि दे शुड. और इसमें क्या है, 8 मिनट का एडेड टाइम दिया गया. मुझे लग रहा है कि अभी रेफरीज को थोड़ा कुछ बोला गया कि भैया जब रुकावट होती है और कुछ भी होती है तो आप पूरा उसको टाइम जोड़ते रहो एंड आप उसको ऐड कर रहे हो. फाइनल रिजल्ट्स एट एल थुमामा स्टेडियम. मैच अभी भी खत्म हुआ. वेरी इंपॉर्टेंट मैच जिसमें सेनेगल काफी फाइट किया, लेकिन उन्होंने 0-2 गोल से नेदरलैंड से हार गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विन फॉर नेदरलैंड. और सेनेगल को अभी बाकी 2 मैच में शायद उसमें कम से कम 1 मैच वो लोग को जीतने का है, अगर इरादा है नेक्स्ट राउंड पे जाए. यश. Yes, it's a clean sheet. First clean sheet for Virgil van Dijk in a major international tournament. तो ये एक बहुत बड़ी बोलते हैं ना कामयाबी पर्सनल लेवल पे वर्जिल वैन डाइक के लिए. बट आई थिंक नेदरलैंड्स वैसे भी कभी भी सेनेगल उनसे जीती नहीं थी. इन द लास्ट, इधर लिखा है मैंने एक स्टैट कि नेदरलैंड्स हैव नेवर लॉस्ट टू एन अफ्रीकन कप ऑफ नेशन कंट्री. सो दैट इज अनदर बोलते हैं ना नेल इन द कॉफिन फॉर सेनेगल. They were unbeaten in their last opening 8 games in the World Cup history. वो लोग पिछले 8 ओपनिंग गेम्स में वो 6 जीते हैं, 2 बार उन्होंने ड्रॉ किया है. तो एंड प्लस इन द लास्ट 14 गेम्स दे वन 11. तो फिर दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग स्टैट कि नेदरलैंड्स आर नॉट एनी पीस ऑफ केक. यू हैव टू बी एट योर ए गेम एंड टू बीट दिस नेदरलैंड्स साइड एंड दिस लुई वैन हॉल साइड यू नीड ग्रेट एक्सपीरियंस, अमेजिंग यूथ, a great manager to have an amazing setup as well. क्योंकि Netherlands, although they didn't qualify for the 2018 World Cup, they are here in 22 and they are here to be, crowned as winners. नहीं, मैच के पहले में एक स्टेटमेंट आया था वर्जिल वैन डाइक का. उन्होंने कहा कि हमारे 2 स्टेटमेंट्स करने का है. तो एक स्टेटमेंट अभी फीफा की स्टैट्यूट से वो बंद हो चुका है, जो उन्होंने वो आर्म बैंड पहन के कुछ उनको मैसेज देने का था, जो फीफा ने अलाउ नहीं की. और दूसरा है कि हम भी बड़े स्टेज में करने को हम कामयाब होंगे और हमारी वो एबिलिटीज है. तो ये उनको थोड़ा सा प्रूव करने का है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे गॉट द 2 गोल्स आज उनको यहाँ पे मिला है. तो अभी यू हैव टू टेल इट, इट इज अ रिसाउंडिंग विक्ट्री. जैसे आपने कहा फाइनल स्कोर था 2-0. उसमें डेवी का गोल था जो आयैक्स के हैं. और again you have a scorer from Cody Gakpo, who is with the PSV Eindhoven. So the homegrown talents दोनों ही डच क्लब के स्कोरर हैं. तो ये भी डच सपोर्टर्स को काफी खुशहाली की कारण रहेगी. काफी खुशी, काफी उत्साह. अभी अगली गेम पल्लव दा बहुत बड़ी मैच, यूएसए वर्सेस वेल्स. वेल्स मेकिंग देयर फर्स्ट अपीयरेंस इन ओवर 64 years, if I'm not wrong. 60+ years के बाद आई थिंक वेल्स ये वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं. इसके पहले वो एक बार खेले थे. आई थिंक दैट वाज व्हेन आई गेस इट वाज व्हेन पेले प्लेड हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप. 1958 वाज द लास्ट टाइम दे फीचर्ड इन इट. बाकी यूएसए तो वी नो दैट क्रिस्टियन पुलिसिक लेड यूएसए साइड हैज कम इनटू द वर्ल्ड कप एज द सेकंड फेवरेट्स टू क्वालिफाई फ्रॉम देयर ओन ग्रुप, वेयर इंग्लैंड एंड ईरान आर द रेस्ट टू. तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग गेम पल्लव दा. सो आई विल सी यू. यस, बिकॉज एक चीज है इसमें, यूएसए में फुटबॉल का, यानी कि एसोसिएशन फुटबॉल का काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है. बिकॉज दे हैव गॉट द मनी, दे हैव गॉट द एबिलिटी, और सारी उनकी है. और दे आर ट्राइंग, बिकॉज इट्स ऑलवेज एज वी कॉल इंडिया क्रिकेट कंट्री. उनको अमेरिका को बराबर बास्केटबॉल कंट्री कहा जाता था बिकॉज ऑफ दिस एनबीए एंड व्हाटएवर. दे हैड देयर एमएलएस, मेजर लीग सॉकर, बट एंड एनबीए एज वेल. बट लेकिन एनबीए का जो है वो उससे भी अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है एसोसिएशन फुटबॉल में या सॉकर में, और उसका टीम काफी अच्छा कर रहा है. सो दिस कुड, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर
वेल्स एज वेल. वेल्स को लड़ाई करना पड़ेगा. इनफैक्ट पल्लव दा ये मैच में तो वेल्स आर द अंडरडॉग्स ऐसा स्टैट्स बता रहे हैं. वेल्स क्योंकि वर्ल्ड कप में इतने एक्सपीरियंस रहे नहीं है, जैसा मैंने कहा 64 इयर्स बाद खेल रहे हैं, तो ये सब चीजें उनके अगेंस्ट रन कर रही है. बट वील ऑल बी वेरी होपफुल एंड वेरी पॉजिटिव बिकॉज इन सम टाइम दैट इज at 12:20 at Indian Standard Time we have Wales versus USA. So Pallav da, I will see you then. To all our viewers, thank you for joining with us. It was an easy Dutch win. That's the scorecard shows, but it wasn't. If you see the game, Senegal put a real fight. So thank you all our viewers. Please like and subscribe to our channel, Digital2 Sports. This was Football Bowl. Pallav da with Yash signing off. Thank you, Yash, and stay tuned. लौट के आइए.